Hello guys, I made a mistake again, so the mic was again off. I'm sorry about that. आपको कुछ सुनाई नहीं दिया होगा. But what I was talking about is in the previous live video हमने बताया आपको कि कैसे फ्री कोड कैंप पे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाने का प्रोजेक्ट होता है और उसमें हमने वो कोड को कैसे फंक्शनल बनाया. उसके अंदर अभी हमने कुछ CSS या स्टाइल्स अभी तक की नहीं है, मतलब कुछ एडिट नहीं किया है. आई जस्ट कॉपीड इट फ्रॉम द प्रीवियस प्रोजेक्ट एंड आई पेस्टेड इट, बट आई विल कवर एन एंटायर सेक्शन एन एंटायर लाइव वीडियो वेयर हम लोग उसको एडिट करेंगे और उसको जितना उसकी जो हमारी सिमिलर वेबसाइट है उसकी तरह बना पाएँ, वो लेवल तक हम पहुंचा पाएँ. बट फॉर नाउ बिकॉज वी आर गोइंग थ्रू द कोर्स वी विल फिनिश द रेस्ट ऑफ द ट्यूटोरियल्स. क्या दिखा रहे हैं, क्या क्या नए फीचर्स सिखाने वाले हैं, वो सब देखते हैं और समझते हैं क्या होता है HTML, क्या होता है CSS, एंड होपफुली we will have learned this soon enough. Maybe a week, maybe less than a week. Anyway, so let's move on to this. I will share my screen quickly. Great. Now you can look at my screen too. And आपको यहाँ पे दिख रहा है, हमें दिखा रहा है ये प्रीव्यू किसका आप बनाने वाला है. Before I go any further, I will close all these tabs. ये सब tabs बाद में हम visit करेंगे. But so this is the preview. So this is what it looks like. मैं थोड़ा zoom out कर देता हूँ तो ज़्यादा clearly दिखेगा. What I'll do is maybe I'll zoom out a little bit more. It seems you guys cannot see my screen. Maybe आपको screen दिख रही है लेकिन वो screen चिपक गई है. So I'll just do something to it. What I'll do is I'll click on Samsung monitor capture. And I press OK. Will that do it? Nope. How about now? Unfortunately, something's happened to my display capture. What I'll do is I'll click on window capture and I'll ask it to capture it again, capture my display again, and that happens. So guys, कभी-कभी OBS में हमें फिर से करना पड़ता है उसको डिस्प्ले कैप्चर को अनसेलेक्ट करना पड़ता है एंड वी कैन चूज़ ऑल द एनी ऑफ द रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस, चूज़ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस और उसको सिलेक्ट करेंगे और फिर से डिस्प्ले कैप्चर को सिलेक्ट करेंगे तो वो वापस हो जाएगा. सो दैट हैपन्स, समथिंग हैपेंड विद OBS एंड दैट्स व्हाई आई वाज नॉट एबल टू एडिट इट, बट नाउ यू कैन. सो मैं परफेक्टली यू कैन लुक एट मी नाउ एंड लुक एट द कोड. सो अभी हम लोग ये बनाने वाले हैं. व्हाट इज़ दिस? सो इसमें कुछ टाइटल वाइटल नहीं है, एक डिव एलिमेंट है. सो डिवीज़न के अंदर डिवीज़न की शायद बॉर्डर डाल दी है. इस डिवीज़न को कोई क्लास नेम दिया होगा. फिर उसके अंदर एक और पूरा बॉक्स है जिसकी बॉर्डर दिख रही है सम डार्क ब्राउन शेड, डार्कर शेड ऑफ ब्राउन, और उसके अंदर 1, 2 और 3 बॉक्सेस है और वो पूरा बॉक्स थोड़ा ब्लर्ड लग रहा है. सो व्हाट आर वी मेकिंग? व्हाट इज़ दिस कॉल्ड? इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. What is this? What does this do? Let's find out. So इस पे हम blur लगाने वाले हैं. Instead of blur radius below, we're going to add a blur radius on it. So इसको blurry कर देंगे. Interesting. What we'll probably do is so अगर ये div element को
कि बॉर्डर को हम ज़्यादा पिक्सल्स दे देंगे प्रॉबेबली, और आई कुड बी रॉन्ग, और जो इसके उसका जो एक्चुअल बैकग्राउंड है उसके ऊपर हम लोग ट्रांसपेरेंसी उसकी उस पर ओपेसिटी सेट कर देंगे अल्फ़ा चैनल यूज़ करके, तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, इट्स ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट, और उसके अंदर ड्रॉप शेडो डाल देंगे। अगर वो डाल देंगे तो देन आई थिंक इट विल लुक लाइक दिस, मे बी नॉट, लेट्स फाइंड आउट, बट आई थिंक ब्लर रेडियस इज डेफिनेटली इन्वॉल्व, और ब्लर और स्प्रेड रेडियस, लेट्स फाइंड आउट. So let's start coding. Great. अरे वाह. I'll zoom in a little bit. So of course we have to add the step 1, और ये मैं यहाँ पे preview भी open करके रखता हूँ. So what does this say? Learn the CSS box model by building a Rothko painting. So what we just saw was a painting. It was, what does it say? So ROTHKO painting. What does this say? Rothko paintings. So these are what we call Rothko paintings, and I think we came across something like this: orange, red and yellow. So we're going to develop or create a Rothko painting using CSS. That is very cool. That is cool. आप painting बना सकते हैं CSS से. Wow. So much wow. Much wow. And we have art in a minute. This, that, then this guy. So that must be Rothko. Mark Rothko is the guy. Great. And this is his painting, one of his paintings. So this dude has been making these paintings for a while. और हम लोग इसकी painting बनाने वाले हैं CSS box model use करके. So let's just read about him. थोड़ा short में पढ़ लेते हैं. So we understand what he is doing. Left scroll, right scroll नहीं हो रहा. Mark Rothko, born Marcus Yakovlevich Rothkowitz, was a Latvian-born American abstract painter. Yeah, no doubt about that. He is best known for his color field paintings that depicted irregular and painterly rectangular regions of color, which he produced from 1949 to 1970. Yeah. Yep. Rectangular and abstract. Well, this is not rectangular. There are rectangulars, but it's not completely rectangular. These are simply rectangular. There's nothing else in it. So that's what it must be referring to. Okay. Yes. Great. Wow. Interesting. So I'll lower the brightness of my computer so that I can look at the screen. Now what does this say? So entrance to Subway, Mark Rothko, Archive, nice. Archive, Mark Rothko Foundation is that. So basically, so this dude is an artist and इसके नाम की painting है, इसके type की कोई painting है जिसको हम बनाएंगे. Preview, so we have the preview open and let's read the step 1. Remember guys, we have to first add the declaration, doc type declaration, और फिर HTML head and body element करेंगे. So I think I'll just quickly show you, क्योंकि किसी ने कल भी पूछा था कि कितने steps होते हैं. So for this project we will have 1 to 45 from step 1 to step 45, and I think ये नंबर अभी कम हो चुके हैं क्योंकि अभी हमें वो करने को ज़्यादा बोलेंगे और वो समझाने का कम करेंगे. So they'll ask us to do something, they'll ask us to add a name element, ask us to put values, but they won't explain to us much more क्योंकि हमने ये सारे projects किए हैं जिससे हमें पता चले. Anyway, so learn the CSS box model by building a Rothko painting. We also finished this survey form. Now let's start this. So every HTML element is its own box with its own spacing and a border. This is called the box model. I see. In this course, you'll use CSS and box model to create your own Rothko style rectangular art pieces. So I think HTML code बहुत कम edit करने का आएगा. Whatever we are going to do will mostly involve CSS and less HTML. So again, preview दिखाया. Great. Start coding. Now step 1. So we'll put the declaration doc DOCTYPE space HTML in lowercase, doesn't matter which. Then we'll add the HTML opening tag, then
slash HTML closing tag, then inside these tags, nope, enter, will add in each will head and body elements. So head, then slash h and body, wait, will head, then body after that, we'll add the slash of course, and that's it. तो यहाँ पे क्या है, एक और स्लैश ऐड कर देते हैं. सो हमने बॉडी एलिमेंट के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स डाल दिए बिकॉज दे आर नॉट सेल्फ क्लोजिंग टैग्स. एंड स्टेप 1 वी हैव फिनिश्ड द स्टेप. बट बिफोर वी डू दैट, declaration and HTML with language is set to English. Yes. So HTML में जाएंगे और उसमें लैंग्वेज एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे. लैंग्वेज इक्वल्स en and I'll put en in double quotes. Great. A head element and a body element. So we added 5 lines of code using one step. So I think that explains why we'll only have 45 steps. So भले ही हमें बहुत कुछ काम करना है, बहुत कुछ कोड करना है, but it will give us more instructions now instead of steps. But it will try to explain to us more so that it's, you know, it's still giving us instructions, it's still making it clear to us that जो आप कर रहे हैं ये कर रहे हैं. Anyway, it works, the code works. हमने language attributes सब बराबर जगह पे डाल दिया है, हमने closing tags भी ठीक से डाल दिए, और हमने head और body को भी HTML के अंदर डाला है. So that makes sense. Now on step 2, within the head element add a meta tag. Yes. So within the head element we'll add a meta tag, not an attribute. So we'll write it inside this head. So meta, this will probably be for meta tag is probably for, it has an attribute for UTF-8. So we'll use char set, of course, character set. So character set, char set equals double quotes capital UTF-8, and we'll close that, and we'll also add a title. Title is not self-closing unlike meta tag, so we'll add a title here, slash, and in the title we'll write ROTHKOPAINTING. If you want to preview this in a new tab, तो आपको अगर प्रीव्यू में देखेंगे तो आपको ये टाइटल भी दिखेगा. So I'll just open this so you can look at it clearly. So अभी तक वेबसाइट में हमने कुछ डाला नहीं है, बट यहाँ पे on top of the screen you can see a small box has appeared, and in that box you can see यहाँ पे preview लिखा है, learn the CSS box. So that's a preview for this. But if it were an actual website, so then वहाँ पे top पे आपके बार के text पे आपको वो दिखता. So moving on, within the head element add a meta tag, we डाल दिया, which sets the char set to UTF-8, वो भी डाल दिया. Add a title element with the value Rothko painting, वो भी डाल दिया. Now we go to the body element. Within the body element, so we're not going to add any attributes to body element as of now. We're only going to do something within the element, not in the opening tags or the closing tags. So add an image element. So we'll add an image element. Image is also, I believe, self-closing, and image element with the source src and double quotes this image. We can also check for ourselves what this image is, what this image looks like. So that's the image. Hide content width. So I'll copy this and I'll paste it here. I'll keep the preview in the same tab as this. So we can see here that we have this image with us, a diagram of a CSS box model. Okay, let's go. Yep, go on to the next step. So like I said, image is img is a self-closing tag. No thank you, ask me later. Okay, थोड़ा मैं और zoom कर देता हूँ तो आपको clearly दिखेगा.
and the zoom L and the scroll works now, guys. I fixed it, so I can use the scroll button now, and that will be easier for me and for you guys to see it. मुझे यहाँ पे माउस लेके जाके क्लिक करके ड्रैग करना नहीं पड़ेगा. And anyway, so step 3, in the CSS box model, this is the box model, every HTML element is treated as a box. Okay, so they're talking about general CSS box models. Every HTML element is treated as a box with 4 areas. Yes. Imagine you receive a box from your favorite online retailer. The content is the item in the box, or in our case, a header paragraph or image element. I see. So this is also a box if you think about it. And whatever text we give, a header, a paragraph, is also inside a box. Whatever we write is also inside a box. We can call it a text box, for example. Then paragraph, so paragraph would also be in a text box. Then we have image, and whatever the size of the images would also be, well, regardless of the size, it will also be a box. Because image की corners होती है, it's either rectangular, either square, or any other shape. Maybe hexagon, maybe pentagon, or more. Anyway, so what does this say? Basically an image element. जो ये image है ऐसे. How is this an image? Because we sourced an image from here, and I can drag it. So एक Mac का feature है, कोई भी image होगा तो वो image को हम drag कर सकते हैं कोई भी website से. Don't believe me? Try it yourselves. Try it yourself. Change the source attribute in the image from HTTPS this, which is diagram-1 png, to diagram2.png. Now, if you read slowly, you will understand that इसमें और इसमें कोई फ़र्क ही नहीं है, except for diagram-1 and diagram-2. If you notice here, CSS box model ये सब same है. So I don't need to copy and paste it. I'll just change from 1 to 2, and it has changed. और अभी हमें दिखा रहा है border, padding, height, content and width. So that's the border, that's the padding. अच्छा, border के अंदर padding होती है और padding के अंदर उसकी height और width होती है, whatever the content may be. So if I think about it, this image is the content. It has a height and width property. और padding की भी property होती है. That padding is probably the distance between the image and the, what would you call this, the preview window from both the sides. Then इसकी border होती है. Interesting. Maybe I'm reading it wrong, but according to this image, content is inside padding and padding is inside border. I see. But that makes sense. The second paragraph where it says imagine you receive a box from your favorite online retailer. तो हमें कुछ भी चाहिए तो वो box में आता है. Let's say I want to buy a phone. तो हम लोग फ़ोन जो खरीदते हैं वो एक box के अंदर आता है. So that, well, the content is the item inside the box, meaning the phone, but we receive it in a box. So in our case, a header, photo, paragraph or image element is the content, and it is inside a box, and that box can also will always have a border. Okay, now we've changed the source attribute. That makes sense. But like I said, every HTML element is treated as a box. तो जो हमने ये image वाला element डाला, वो image element is in itself a box. Not in itself, is a box. Next, the content is surrounded by a space called padding. Similar to how bubble wrap separates an item from the box around it. Yep, that makes sense. तो जो हम लोग, for example, let's take a phone again, and if you buy, let's not take a phone. आप Amazon से कोई courier मंगाते हैं, तो अगर वो perishable goods होंगे तो उस पर उन्होंने bubble wrap डाल के दिया होगा. So you can think of bubble wrap as padding, and you can also refer to this image. It says border, padding and content. So the content is surrounded by a space called padding. So yes, the content
is surrounded by a space called padding. So yeah, that makes sense. And think of border like the cardboard box your item was shipped in. But then wouldn't padding be outside? Then in that case, the bubble wrap is surrounding the box and is inside the box, not surrounding the product. Well, I'll use better words. कभी कभी अपने शूज़ में देखा होगा, आप शूज़ बाय करते हैं तो शूज़ के आसपास का पेपर लगा हुआ था. सेम वे अगर कोई कांच की आइटम आप खरीद रहे हैं तो वो बॉक्स के अंदर वो चीज़ को बबल रैप किया जाता है. सो द सेम वे दैट्स व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट. सो पैडिंग इज़ दैट बबल रैप एंड बॉर्डर इज़ द बॉर्डर ऑफ द बॉक्स. एंड HTML एलिमेंट, एनी एलिमेंट इज़ ए बॉक्स. उसके अंदर जो हम लोग स्पेसिंग मूव करते हैं लेफ़्ट राइट कि भाई इतना डिस्टेंस चाहिए, वी कॉल दैट पैडिंग. एंड मेन इज़ द कंटेंट. कंटेंट की हाइट क्या होती है, उसकी विड्थ क्या होती है. आई थिंक आई अंडरस्टैंड इट अ लिटिल बिट नाउ. सो थिंक ऑफ बॉर्डर लाइक कार्डबोर्ड बॉक्स योर आइटम वॉज शिप्ड इन. Yeah, that makes sense, self-explanatory. Now we'll change the source attribute from, well, we'll not change the source attribute, we'll change the value of the source attribute. So HTTPS and freeCodeCamp curriculum CSS box model, it's the same, but now we're going to look at the third diagram. Now what does the third diagram do? Show. Yep. So now we have margin that is outside the border. We have another picture of margin that is also outside the border. So हमने पहले ये समझा content क्या होता है, content का padding क्या होता है, उसका border क्या होता है, element border and margin. So let's see what does it say about margin. Margin is the area outside of the box and can be used to control the space between other boxes or elements. So भाई पेज पे वो कहाँ दिखेगा. So if I go to preview, let's see. I'll have to open it in a new tab. यहाँ पे मैं दिखा रहा है, वो थोड़ा ज़्यादा ही zoomed in है, sorry zoomed out है. Yep, that's it. So you can see this. So ये image यहाँ पे end हो जाता है. This is where the image ends. So this space is what you can call a margin. वो कितना space होना चाहिए, that's, well, margin decides how much space we need to add. To control the space between other boxes or elements. So not only the distance from the left side of the screen, but अलग अलग elements के बीच में उसके कितना margin होना चाहिए, कितना spacing होना चाहिए, वो सब दिखाता है. Moving on, step 5. Okay, here the bottom element has a larger top margin. I'll open the preview here. The moment I open a preview here, वो जो new tab था वो next tab में जो open था वो बंद हो जाएगा. If you notice here, यहाँ पे भी tab open है. Keep your eye here. And the moment I click on preview here, the tab will close and you can see the tab has disappeared. It has not disappeared, यहाँ पे preview आ गया instead of that tab. Anyway, here the bottom element has a larger top margin. Okay, larger top margin, maybe not. Pushing it further down the page. Now that you understand the CSS box model, let's get started on the Rothko painting. So here the bottom element has a larger top margin. So what does that mean? So bottom element has a larger top margin. Yep, it does. So if I see the distance from here till the border box and from this pink line, well, not pink line, from the beginning of this pink box till border, तो इन दोनों का difference अलग है. So the bottom element does have a larger top margin क्योंकि ऊपर से उसका space ज़्यादा है. If you think about it, दोनों का space difference है. So इस box का top margin और ये text के ऊपर का top margin, yeah, it's larger than this. Pushing it further down the page, now that you understand the CSS box model, let's get started on the Rothko painting. Yep. So we will remove the image element. So this image element was only for us to understand what the CSS box model is. हटा दिया and come on, enter. It's empty and that works. Now on to step 6. Add a div element in the body. Okay, we will add a div, also division. So we'll add a division element.
division is not self closing, so we'll add a closing tag to set the class attribute equal to canvas. So class equal to, this will be helpful for CSS. So हम लोग अभी I think we'll probably go to the next step in go to CSS file in the next step. For example, div class my div. That's very nice of us to show, nice of them to show us. Yeah, it's very nice of them to show us the examples still. तो प्रैक्टिस करते करते और घुसेगा. This will act as the canvas for your painting. Great. Submit and go to next challenge. Okay. Now we're on step 7. Before you can start styling the div you added, you need to link your CSS to your HTML. Okay. So अभी हम लोग वो CSS फाइल को करेंगे. So before I look at any of the steps, let's try to link it ourselves. So shift link link space, now we will write rel relation. The relation is style sheet, not style sheets, we came across that earlier. And I will write href equals to double quotes styles dot css, styls.css. I made a lot of mistakes the last time when we were doing the registration form, but maybe I have improved. So link rel style sheet href styles.css. Now let's read the steps. Is it the same thing or did I miss a step? So add a link element to your link to link your styles.css file. Yup, we have set the href to styles.css and remember to set the relationship attribute to style sheet. Done. And that works. And now to step 8. थोड़ा scroll करके ऊपर जाते हैं so you can see क्या हो रहा है. Okay, time for CSS. Even though your div has no text, it's still treated as a box with content. Yep. Write a CSS rule that uses the .canvas class selector and set its width to 500 pixels. Here's the CSS rule that sets the width of class card मतलब example दे रहे हैं card to 300 pixels. So you know what, I will write this. So I'll write dot canvas because we're going to edit that class selector में लिखेंगे width colon space 500 px. और उन्होंने हमारे लिए एग्जांपल दिया कि ऐसे लिखते हैं so that we don't make any mistake. So dot canvas with 500 pixels. So even though you're okay, here's the CSS rule. Yep. So that's it, and we have the green light. Great. Now on to step 9. हमने canvas डाल दिया, but we haven't added a background color yet, so that's why we can't see the div element yet. Now add the height property with the value 600 px to your canvas rule. So just to show you guys what it looks like, I will put background color for now, और जब हम सबमिट करने जाएंगे तो मैं बैकग्राउंड कलर हटा दूंगा. सो BACKGROUND background hyphen color colon blue and semicolon. Do not forget to add that. I see. And what were we going to write? So we're going to give it the height property, height colon 600 px, and you can see it now. What if I write 100? जैसे मैंने 100 रखा उसकी height कम हो गई. And you can see the margin. So this div element is a box. If you think about it, an element, a block box, and इसका margin ये है, and this is it. और इसके अंदर हम जो भी text डालेंगे that will be the content, या फिर इसके अंदर image डालेंगे तो that will be the part of the content. और अगर वो image और ये ब्लॉक में कुछ डिस्टेंस रखना है कि हमें ब्लॉक भी दिखे, ब्लॉक का बैकग्राउंड भी दिखे, देन वी विल यूज़ पैडिंग. बट एनीवे, दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक. अभी तो कुछ दिखेगा नहीं आपको, ये सब आपको दिखाने के लिए मैंने कलर डाला था. बट या, सो एट द हाइट प्रॉपर्टी वी हैव एडेड द हाइट प्रॉपर्टी विद द वैल्यू 600
and by default it's white. Great. I have a message. Nope. Step 10, change the background color of the canvas to this. So background color डालना आएगा. So we'll use the hex code. So I'll write BACKGROUND hyphen color colon hash. So hex code 4D0F00 and semicolon. Yep, and you can see it right here. अब मैं scroll करूँगा तो मुझे दिखाएगा कि इतना बॉक्सेस ने बना के दिखाया है. Okay. If the height were 500 then the size would have been different. थोड़ा छोटा दिखता. Yeah, और थोड़ा कम scroll करना पड़ता. But you can see for yourselves. Now check your code. Control plus enter. Yep, it is correct. This keeps tangling. Okay, इसको मैं थोड़ा यहाँ पे कर देता हूँ. Earphones keep coming in my way. Anyway, every painting needs a frame. Wrap the canvas element in another div. Okay, so हम लोग wrap करने वाले हैं. Dot canvas element in another div. Give that div the frame class. That makes sense. So what I'll do is I'll copy this और यहाँ पे मैं paste कर दूँगा ये closing tag, क्योंकि हम लोग wrap करने वाले हैं. WRAP, not wrap. So that's why I pasted it here. अरे बाप रे. Now on the 9th line इस पे भी tab दबा दे so that it's part of the body tag. इसको और कर देते हैं, इसको इसके अंदर कर देते हैं. You can make it put it in this line anyway. Yep. So it looks much clearer. So it's nested inside body. It should be a part of the body element. But कुछ हो गया है. हाँ, we also have to change the class ID, class value. So it will be frame now. हो गया. Now we'll edit the frame. We'll add a new class selector with the name dot frame space curly brackets enter border. So we're going to use a shorthand declaration to give dot frame a solid black border with a width of 50 pixels. So 50px solid and black, and you can see that. मैं tab open कर देता हूँ so you can see it clearly, and you can see it now that this div with 500 by 600 pixels is here. और इसमें हमने बॉर्डर डाल दी है फॉर व्हाट, तो हमने इसकी फ्रेम की बॉर्डर हमने सेट कर दी है. सो आई वाज राइट व्हेन आई लुक्ड एट द प्रीव्यू दैट इट इज़ ए बॉर्डर, और उसके अंदर हमने एम्प्टी रखा है. एनीवे, सो नाउ लेट्स चेक वेदर वी हैव डन एवरीथिंग राइट या फिर कुछ गलती की है. एंड वी आर राइट. सो फर्स्ट वी पुट द पिक्सल साइज, द साइज ऑफ द बॉर्डर कितने पिक्सल्स होने चाहिए, कितना वाइड होना चाहिए बॉर्डर की साइज़, एंड सॉलिड होनी चाहिए या नहीं, एंड क्या कलर होना चाहिए. सो वी वांटेड ए ब्लैक सॉलिड बॉर्डर विद अ विड्थ ऑफ 50 पिक्सल्स एंड वी गॉट इट. थोड़ा जूम आउट कर दूंगा तो और क्लियरली दिखेगा. सो दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक. इफ यू नोटिस हियर दैट stays stuck to this end of the screen, but the size of this decreases when we zoom out and zoom in. Why? Because we've specifically mentioned the size of this 500 by 600, but we have not mentioned the size width of this second div, the frame. The frame is much too wide. That is true, it is much too wide. In frame, set its width to 500 pixels. So now we'll set the width. So width colon 500px semicolon, एक और tab डाल देते हैं so that it follows the format. Yep, we've successfully added the width, and you can see here that even if I zoom it, scale it, zoom in or zoom out, even if I zoom in or zoom out, it still is the same. Great. Now on to the next step. Step 14, use padding to adjust the spacing within an element. So now we're going to use padding. हमने padding पहले भी किया था. किस में किया था? So हमने
वेल मेन्यू में किया था पैडिंग का यूज़ और हमने मार्कर्स में पैडिंग का यूज़ किया था. And we also used padding, I believe, in the form. Now use padding to adjust the spacing within an element. Okay, so हम लोग probably अभी padding properties देखने वाले हैं. Padding left, top, bottom, or just padding itself. So it is a shorthand property in CSS to increase the space between the dot frame and dot canvas elements by 50 pixels. So that's what we're supposed to do. The shorthand will increase the space in the top, bottom, left and right of the elements border and canvas within. Why? Because we're only using padding. So वो equally हर एक साइड से वो जितने भी पिक्सल्स डालने हैं वो पैडिंग कर देगा, उतने पिक्सल्स का पैडिंग कर देगा. Not only from left to right or top and bottom or one of those. So in dot frame use the padding shorthand property to increase the space between. अच्छा सिर्फ डॉट फ्रेम में करने वाला है. सो आई एम नॉट गोइंग टू राइट डॉट फ्रेम अगेन. यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि उसने टैप करके रखा है मेरे लिए. सो आई विल राइट पैडिंग कोलन स्पेस 50 pixels, so 50 px. You can see the preview here. It has automatically changed the padding size, padding value. What was it before? So यहाँ पे मैं जैसे immediately text हटाऊँगा यहाँ पे दिख जाएगा, आपको दिख रहा है यहाँ पे. Great. So 50 pixels का padding उसने डाल दिया and you can see it. Great. That's it. And we go to the next step. Use margins to adjust the spacing outside of an element. Outside of an element मतलब if you think of this as an element, then ये जो spacing है, ये spacing को edit हम कैसे करेंगे, उसके साथ कैसे खेलेंगे. So using the margin property, give the dot frame element a vertical margin of 20 pixels. So margin 20 and semicolon, and you can see the difference immediately. If I want to keep the preview side by side, then we'll also be able to look at it immediately. ये थोड़ा zoomed in है, but doesn't matter. 20 px. इसको मैं हटा दूँ तो automatically वो distance change हो जाता है. Great. This will move the frame down 20 pixels and horizontally center it on the page. It did that. Now on step, wait a second. So मैंने कुछ गलती कर दी. I see. So vertical margin हम 20 pixels कर रहे हैं, but horizontal margin auto करने वाले हैं. So auto. I see. I made a mistake there. So give the frame element vertical margin and horizontal margin of auto. This will move the frame down 20 pixels, which it did, and horizontally center it on the page. So if we open the preview here in the preview tab, now it will be in the center क्योंकि हमने left और right से auto values रख दी है, not anything. So इस screen के हिसाब से हम जितना भी zoom करेंगे वो फिर भी center में रहेगा. If you see here, I'm pressing command plus and minus buttons to zoom in and zoom out. Anyway, so auto use करके हमने center में कर दिया left right values and margin हमने 20 कर दिया. So तो वो ऊपर से, well yeah, you won't be able to see, ऊपर से उसने 20 pixels add कर दिया, 20 pixels का gap add कर दिया, space add कर दिया. Anyway, check your code. Our code works. Great. Now we're back to index.html file. Add a new div element inside of your .canvas element. Give the new div the class attribute with a value of 1. This will be your first rectangle. I see. So we're going to create our first rectangle. So अभी हम लोग canvas element के अंदर एक और div डालेंगे. So if you see here, thanks to freeCodeCamp, उसने already हमारे लिए gap डाल के रखी है. So div class, but we don't see any closing tags after this line. So इसके अंदर हम डालने वाले नया div. So tab, एक बार tab दबाने से उसने automatically उसने मुझे move कर दिया. And now we're going to add a new div element. So div, copy this, paste, put a slash, and we'll give this a class attribute with the value 1. क्या दिखा रहा है? अभी भी कुछ आया नहीं क्योंकि हमने उस div को अभी तक
उस क्लास वाले डिव को अभी तक कुछ कलर वलर कुछ साइज वाइज नहीं दी है. आई थिंक वी हैव एक कैनवस ना. अभी उसके अंदर हम लोग 3 और रेक्टेंगल्स डालने वाले हैं. एक तो हमने डाल दिया, 2 और डालेंगे. सो व्हाट आई विल डू इज़, wow, we have 4 concurrent viewers. Wow, that is great news. I'll increase the brightness of this laptop. Wow, that is great news. Thank you all the 4 viewers for watching. I hope we see you in the videos too. अगर आपको कुछ भी समझ आ रहा है नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए. If you think I'm explaining something wrong, then you're happy to help. Feel happy to help. And feel free to help. Well, not feel happy. But yeah, thank you so much for your support. And hopefully आप अपने फ्रेंड्स को भी बताएंगे इस वीडियो में क्या मैं क्या सीखने का ट्राई कर रहा हूँ. आपके साथ ही सीख रहा हूँ. ये सब मुझे भी पूरा नहीं आता है. जितना मैंने किया है वो आपको दिखा रहा हूँ. और जितना मैं साथ में लर्न कर रहा हूँ, जितना मैंने प्रीवियस इन्फॉर्मेशन रीड किया उसके हिसाब से मैं लर्न कर रहा हूँ. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप. With write a new rule that targets .1 and set its width to 425 pixels. So again we have Google Chrome. यहाँ पे माउस पे क्लिक करके मुझे एक्टिव विंडो बनाना पड़ेगा इसको. यहाँ पे मैं लिखूँगा .1 space curly brackets and will set it with its width to 425 pixels. WIDTH colon space 425 and semicolon. But we haven't added a color yet, so we won't be able to see anything. So we'll probably add a background color in the next step. But if you think about it, it will appear somewhere in here. और इसकी width भी हमने set कर दिया 425, so it will be closer to this. मतलब उसकी width same होती है, so same होगी. Let's find out. Go to the next step. Step 18. Now set the height for 1 to 0.5, 150. Sorry, .1 to 150 pixels. So अभी हम height set करेंगे. So what will be the height? So I'll write HEIGHT colon. इसमें से थोड़ा indentation is important, guys. We have 5 viewers now. Wow, that is an all-time high. Thank you so much, guys, for watching. And as you can see here, you can also follow along with me. आप खुद freeCodeCamp open करके खुद ये कर सकते हैं, खुद देख सकते हैं. And you can follow what I am doing, follow the steps I have been adding. मैं mostly हर एक step को समझाता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ. And I also read the steps, read them aloud. So अभी हम लोग height की value रखेंगे 150 px and semicolon. Now we'll go to the preview tab. अभी भी कुछ आया नहीं है क्योंकि हमने अभी तक कलर ऐड नहीं किया. background color, but we have set the height so far. Now अब हम लोग इसका background color ऐड करेंगे like I said. So background hyphen color semicolon space. Now we'll add it, give it a hex value of EF lowercase b762. That is, what color is that? Let's see. So that's what it looks like. हमने इसकी width 425 की और इसकी height 150 pixels की. So this is what it looks like. अभी we'll probably add some padding and some margin too. So let's continue. Great. Step 19. Now we are on step 20. Use margins to position the .1 element on the canvas. So अभी हम margins डालेंगे so that you know it moves a little bit. So what I'll do is on step 18, we're still in styles.css. We're not going to add those signs. So we're still in .1 element. So मैं tab press करूँगा. After pressing tab, I will add a shorthand property called margin property. So I'm a margin colon space and I'll write 20 px semicolon. Great. And so that was for vertical margin. And now we're going to add the horizontal margin. तो मैं यहाँ पे लिखूँगा auto. And you can see here automatically वो center उसने ले लिया है, left और right horizontally उसने align कर दिया है so that it stays in the center all the time. Wow, that is good. And vertically it's 20 pixels
हमने 20 का मार्जिन डाला, बट देयर इज नो चेंज, और मे बी आई एम नॉट लुकिंग एट द चेंज. व्हाट इफ आई मेक इट 0 फ्रॉम हियर? So this is what it looks like now. If I remove it, there is no change. Maybe I'm looking at it wrong. So यहाँ पे मैं प्रीव्यू खोल के रखता हूँ. प्रीव्यू में देखते हैं, अगर मैं 20 यहाँ पे लिखता हूँ तो क्या चेंज होता है. Yes, it moved. The whole box moved. Well, the whole element moved. So both of these colors moved. ये भी move हुआ और ये भी move हुआ. From what? From this border. From this div element called canvas. Okay. So yeah, we added these properties. We're good to go to the next step. Now we're on step 21. So now dot 1 is centered horizontally. Yep, that's true. But its top margin is pushing past the canvas and onto the frame's border. Yes, वो frame के border में बैठा है, वो उसके अंदर नहीं जा रहा है. So what I mean to say is, I'll open the preview for you guys. So यहाँ पे आपको दिख रहा है वो border पे चिपक के बैठा है. It's not going in. इसने इतनी जगह मूव कर दी है. सो क्या करेंगे अभी? सो what does it say? So but its top margin is pushing past the canvas and onto the frame's border, shifting the entire canvas down 20 pixels. या तो उसने पूरे canvas को 20 पिक्सल्स नीचे कर दिया, which we don't want. So what will we do for that? So we'll add padding. Remember guys, padding property. If you want, then I can also show you guys. I'll keep that image open in a few more tabs. So जब भी काम है तो हम वो image को वापस review कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं और हम revise कर सकते हैं. So padding colon space 1px and semicolon canvas element to give the dot 1 element something solid to push off. And you can see that now that यहाँ पे अभी space आ गया. You can see, yeah, that space has appeared. Before that there wasn't any space. तो हमने अभी dot canvas में padding डाल दिया. So just for you guys, I'll save my progress first. And what I'll do is I'll go to menu, और हम लोग ने जो links copy की थी वो मैं यहाँ पे paste करूँगा. Well, I didn't copy them. So जो images थे, diagrams थे हमारे लिए, so we can use that for reference. So I'll open responsive web design and just give me a second guys. So we were here somewhere in the 5th or 6th step, maybe must be in the 5th step. So we have this image और इस image का source ये है. So I'll keep this image open in a new tab for us to refer. Padding, wedding, ये सब क्या होता है, ये सब margin क्या होता है, so that we don't get confused at all. The same way मैं steps वापस open करता हूँ और मैं दूसरे 2 images को भी open कर देता हूँ, so that you guys can also understand and I can also refer to them. That was not in this, maybe it's in the third step. Yep, this was the image. I'll open this image in new tab and we have that diagram 1 open now. So diagram 1, 2 and 3, I can open 3 immediately by myself. यहाँ से मैं copy करूँगा address को और मैं paste करूँगा address को यहाँ पे, और instead of diagram 1 I'll write diagram 2. So now we have all the 3 diagrams open in these tabs. We can refer to them anytime we get confused. ये padding क्या होता है, height क्या होता है, content क्या होता है, margin क्या होता है. So I think 1, 2 and 3. So I think we don't need the first image. First image में सिर्फ इसको ही refer किया गया, इन दोनों का मतलब क्या है वो नहीं दिखाया है. We have a diagram for border, padding, height, content, but we have also margin. I think we should only keep this. So हम लोग अभी जो हमने रूल चेंज किया वो padding का रूल था. हमने जब padding का रूल चेंज किया तो उसका डिस्टेंस हमें थोड़ा कम दिखने लगा, डिस्टेंस कम हो गया. Now we are on step 20. Use margins to position the dot 1 element on the canvas. ये भी आपको वापस दिखा देता हूँ guys. What is dot 1 element and what is canvas and what's frame. So this, what you see, what you call light brown color, and this is dark brown. So light brown is dot 1. It is the class called 1. It is the div class 1. फिर ये जो है, this is called the canvas and this is called the frame. So ये frame है, ये 1 है और ये canvas है. So यहाँ पे मैं index में बंद कर दूंगा. So अभी हम लोग क्या करने वाले हैं,
हम लोग वन एलिमेंट को, इस एलिमेंट को पोजीशन करने वाला है मार्जिन्स की मदद से. I can also open this in a new tab so that you can see it clearly. So अभी हम वन एलिमेंट को मार्जिन्स की मदद से मूव करेंगे, पोजीशन करेंगे. And the shorthand margin property. So shorthand property, guys, margin is a shorthand property. What is shorthand? So we'll look it up. It says a method of rapid writing. Nope. Let's find the meaning of this in Google. So I'll double click on this word and I'll press right mouse button, and I'll click on search Google for shorthand. यहाँ पे दिखा रहे a method of writing rapidly by substituting characters, abbreviations or symbols for letters, sounds, words or phrases. अच्छा, shorthand fast लिख दिया, but when correct this is लोग shorthand यूज़ करके sign करते हैं. Maybe it's for that. Is an abbreviated symbolic writing method that increases speed and brevity of writing as compared to longhand. A more common method of writing a language. हम लोग कुछ भी लिखते हैं तो शांति से लिखते हैं, या फिर स्पीड में भी लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे कि लोगों को समझ आएगा. So this is the complete opposite. Will focus more on speed and brevity. Brevity is also the quality of being brief, of writing as compared more common. The process of writing in shorthand is called stenography, from the Greek stenos and graphene. So process of writing in shorthand, so stenography. But I didn't understand this in HTML. So shorthand HTML, what does that mean? Shorthand properties are that let you set values of multiple other CSS properties simultaneously. So multiple CSS properties allow करती है अलग multiple CSS properties को हम set कर सके. Great. So we'll use this margin property. That is a shorthand property. So a margin, because it's universal, you can apply margin for all the elements, any element, any class. Well, elements, but classes. So margin property with a vertical margin of 20 pixels. So the first value is for the vertical margin, and the second value after the space is for the horizontal margin. हमने कॉमा डाल दिया है. So लेफ्ट से, ऊपर से 20 पिक्सल्स और नीचे से 20 पिक्सल्स, एंड लेफ्ट और राइट से ऑटो, सो दैट इट स्टेज इन द सेंटर. लेट्स सी इफ आई हैव डन एवरीथिंग राइट. यप, ग्रेट. सो हमने क्या अभी चेंज किया, हमने वन एलिमेंट को एडिट किया. इफ़ यू आर नॉट श्योर व्हाट यू आर डूइंग, देन यू कैन स्क्रॉल अप एंड डाउन. जब स्टेप्स दिखाते हैं उसका मतलब नहीं है, ज़रूरी नहीं है दैट यू कैन नॉट स्क्रॉल अप एंड डाउन एंड रीड फॉर योर सेल्व्स. In fact, you should read for yourselves whenever you don't understand steps. तो उसके आसपास आप रीड करेंगे तो आपको ज़्यादा आइडिया आ सकता है. Now, and of course you have to read inside it too, whatever is written inside it too. Use margins to position to dot one. ये सब हमने कर दिया है. We'll go to the next step. So now one is centered horizontally. It is centered horizontally, and we can see the 20 pixels from top. But stop margin is pushing past the canvas and onto the frame's border, shifting the entire canvas. What? Let's read this again. Now one is centered horizontally. Now I'll keep the preview here. शायद मैं समझ नहीं पा रहा हूँ. So it is centered horizontally, but its top margin is pushing past the canvas. No, it's not. What is going on? You know what? I'm going to go and resume the project again. Now I'm on step 20. Interesting. उसने save नहीं किया. Is my internet not working or what? You already came across this. I'm going to refresh the page. And I'll go to learn the CSS box model. अच्छा, उसने 20 के बाद हमारी प्रोसेस उसने की नहीं, maybe some glitch. So I'll resume project. But now we're on step 21. Interesting. But it still says, but its top margin is pushing past the canvas. No, it's not. How is it pushing past the canvas? And onto the frame's border. What? So shifting the entire canvas down 20 pixels. No.
सो हमने 1 पिक्सल का पैडिंग डाल के दिया है. So it says add padding of 1 pixel to the dot canvas element to give the one element something solid to push off. We've already done this. I don't know why it's showing me this again, but it is correct. Submit and go to the next challenge. Adding 1 pixel of padding to top, bottom, left and right of the canvas changes dimensions to 502 pixels by 602 pixels. Okay. या 1 पिक्सल का पैडिंग डाल दिया. तो रिप्लेस द पैडिंग प्रॉपर्टी विथ ओवरफ्लो सेट टू हिडन हाइफन चेंजिंग द कैनवस बैक टू इट्स ओरिजिनल dimensions. So this is not what it should look like, this is not what it was. So instead of padding I will replace this, I'll replace the entire thing with overflow semicolon, not colon, and I'll write hidden as the value. So what happened? I see, you can see that we were padding डाल दिया, overflow hidden, so changing the canvas back to its original dimensions. हो गया. Now we're on step 23. I'll press Command S to save. Also you can use Control S, it will give you the same result. Add another div with a class value of 2 just below your dot, well just below your one element. So अभी हम वापस index.html फाइल पे आ गए. आपका ध्यान ना जाएगा इस, तो you can look here, this is highlighted, the text is black and the color of this box is white. That means that we are in this file right now. This is the file that is open. अगर इसको मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे दूसरी फाइल भी दिखाएगा. And you can see, you can also notice that it is a styles.css file by noticing the curly brackets. हम लोग index.html फाइल में curly brackets use नहीं करते. But you can also look at the colors to determine which file is open. So यहाँ पे हम लोग div element डालने वाले हैं. And the value of that class will be 2. तो हमने अभी 1 कर दिया है. Now अभी हम number 2 की values डालेंगे and we'll probably place the second triangle below the first triangle. Sorry, rectangle. So what I'll do is I'll create a div element, the lines, the wires. The wire is, wire is keeps coming in my way. Anyway, I'll find a solution for that before the next live video. But anyway, div डाल दिया, div का open and closing tag डाल दिया, इसका spacing भी set कर लिया. I'll scroll a little bit more. And what does it say? So अभी div का हम class mention करेंगे. What will be the class? So class equals to double quotes 2. हो गया. Okay, yes, thank you so much. We'll ask it to ask me later. So create a new CSS rule. अभी हम लोग 2 वाले rule को edit करेंगे. It's also called a class selector because it's a custom CSS class. And set its width to 475. By default अगर मैं कुछ px नहीं लिखता हूँ तो वो समझ लेगा कि वो pixels लेने हैं. If I don't, if I'm selecting something else, अगर मैं कुछ और कर रहा हूँ तो फिर मुझे pixels की जगह वो % या फिर कुछ और mention करना पड़ेगा. But even if I write 475, it will by default take the value. Set the height of the 2 element as 200 pixels. So HEIGHT space 200 and semicolon. See, like I said. Now we go to step 26. Now we'll set the background color so that it is visible. So I'll write BACKGROUND semicolon and we'll put this color. So 8F0401 semicolon. Interesting. So now we have a third box, and in the preview you can see that it is here. You can see this box and it's on the left and it's below div क्योंकि हमने इसका padding
उसका मार्जिन लेफ्ट टॉप एंड बॉटम से भी रखा है और मार्जिन लेफ़्ट एंड राइट से ऑटो रखा है. इसमें अभी तक हमने वो वैल्यूज़ पेस्ट नहीं किए, वो प्रॉपर्टीज़ अब तक हमने ऐड नहीं की है, तो वो अलग दिख रहा है. लेट्स गो बैक. सो हमने बैकग्राउंड कलर डाल दिया है. ग्रेट. Step 27, center the dot to element by setting its margin to auto. Yep, we will. So सिर्फ margin auto लिख देंगे तो वो automatically left right, so top and bottom and left right से वो automatically move कर देगा खुद को. It will place itself in the center. So margin semicolon and auto. अगर मैं एक ही वैल्यू डाल रहा हूँ दैट मीन्स वो मैं हर एक के लिए टॉप बॉटम लेफ्ट राइट ऑटोमेटिकली सेंटर रखने के लिए डाल रहा हूँ. ग्रेट. डन. क्रिएट ए न्यू डिव विथ ए क्लास वैल्यू ऑफ 3 राइट अंडर द 2 एलिमेंट. यप, इंडेंटेशन इज इम्पॉर्टेंट गाइज. नेस्टिंग में बहुत नेस्टिंग अगर समझना हो नेस्टिंग कैसे काम करते हैं, इंडेंटेशन इज द वे टू गो, or the other way around. So create a new div element, इसके अंदर slash div with a class value of 3. You can notice हम लोग HTML में इतना कुछ नहीं कर रहे हैं. हम लोग जो भी कर रहे हैं मोस्टली CSS में कर रहे हैं. हम लोग सिर्फ HTML फाइल में divs डाल रहे हैं या फिर उसके क्लास डिक्लेयर कर रहे हैं, बट नथिंग एल्स रियली. उसमें हमने कुछ टेक्स्ट नहीं डाला है. You can see there is no text here because we're making a painting. So it's pure CSS. अभी हम लोग CSS में class value of 3 under 2 elements. So यहाँ पे मैं लिखूँगा THREE and we're good to go. So now we will write. अच्छा. What if I go to the previous step? Right. Create a new div class with a value of 3 right under the dot 2 element. Well. Yeah, this is the dot 2 element, but anyway, it should not have said dot 2 element, it should have said dot 2 class or 2 class. Anyway, you don't always have to use pixels when sizing an element. Okay, so हम लोग को pixels लिखने की ज़रूरत नहीं है. We can also use percentage. So dot 3 space curly brackets width with 91%. What does it look like? That's what it looks like for 3. We don't have a color for this yet, so कुछ कलर नहीं है तो वो by default दिखता ही नहीं है. हम लोग को कुछ कलर डालना पड़ेगा पहले. So now we're on step 30. Set the height of dot 3 to 28%. So HEIGHT semicolon space 28%. So 28 semicolon %. We still can't see because we haven't added a background color, but we'll probably add a background color now. So we'll add this color now. So what does this color do? So B20403. That's what it looks like. अभी इसमें padding margin of the कुछ डाला नहीं है, and this is why it looks that way. और हमने उसकी कुछ width height भी set नहीं की है. Well, width height set की है. Yes, हमने की है. So it's 91% and 28%. So width is 91% of the canvas and 21% of the canvas. I see that. Anyway, हमने कलर भी डाल दिया. अभी हम लोग उसका पोजीशन देखेंगे. So we will center it by setting the value to margin colon AUTO, तो ऑटोमेटिकली उसको सेंटर में कर देगा. बट अभी भी उसका थोड़ा डिस्टेंस, इट्स नॉट इन द इट्स नॉट, देयर इज़ नो गैप बिटवीन द सेकंड डिव एंड द थर्ड डिव. तो अभी हम देखेंगे वो क्या है, क्यों है. So margin auto, of course. Now step 33, it's helpful to have your margins push in one direction. In this case, the bottom margin of the one element pushes 2 down 20 pixels. So one pushes 2 down 20 pixels. It's true.
ये जो डिस्टेंस है 20 पिक्सल्स का, इट इज़ पुशिंग इट डाउन इफ़ यू थिंक अबाउट इट. So what will we do? In the to selector, use margin shorthand property to set the top margin to 0, horizontal margin to auto, and bottom margin to 20 pixels. I see. Okay. So हम लोग margin use करेंगे and top margin हम लोग 0 रखेंगे, then horizontal margin auto and bottom margin 20 px. क्या होगा इससे? ये यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो गया. 20 पिक्सल्स ऊपर, 20 पिक्सल्स नीचे. मार्जिन सेट कर दिया. दिस इज़ द मार्जिन गाइज. अगेन रिमेंबर दिस बॉक्स, इस बॉक्स से बाहर जो एरिया वो मार्जिन है. सो इफ़ यू थिंक ऑफ दिस इज अ बॉक्स, को उसके बाहर का जो एरिया दैट्स द मार्जिन. सो द सेम वे फॉर द क्लास सिलेक्टर विद द नेम डॉट टू, हमने उसका मार्जिन सेट कर दिया. तो हमने क्या सेट किया? तो हमने ऊपर से मार्जिन 0 कर दिया, सो दैट इट डजंट पुश द फर्स्ट div डजंट पुश द margin of the second div, and horizontally auto so that it stays in the center from the left and the right, and bottom margin. So यहाँ पे हमने 20 पिक्सल्स डाल दिया. So जैसे फर्स्ट के बॉटम मार्जिन में हमने 20 पिक्सल्स डाले थे, द सेम वे यहाँ पे भी हमने डाल दिए. इसमें टॉप भी डाले थे, उसमें बॉटम भी डाला है, बट इसमें हमने टॉप 0 रखा है और बॉटम डाल दिया. एंड हॉरिजॉन्टल इज ऑफ कोर्स ऑटो. एंड नाउ it looks much more better. It's much better. Now in the tool selector, use margin shorter. Yep, ये डाल दिया है. Great. Now we go to the next step. We've already reached the 34th step. और 1 घंटे में हमने 34 steps ख़त्म कर दिए. That is very cool. The colors and shapes of your painting are too sharp to pass a Rothko. Yep. Why? Because Rothko's paintings are not this sharp. They're not. They're much more blurry. They're much more curvy. We have more curves in the nature than sharp objects. So we'll probably make it more curvy. curvi. We'll use blur. Okay. So colors and shapes of your painting are too sharp to pass a Rothko. Use the filter property to blur the painting by 2 pixels in the canvas element. So we'll use another property. So हम लोग डॉट कैनवस एलिमेंट के अंदर ही हैं. बिकॉज वाई बिकॉज वी कैन सी दिस एंडिंग कर्ली ब्रैकेट, और ये 6th लाइन के बाद है, 6 and 7, एंड वी आर इन कैनवस प्रॉपर्टी नाउ. सो यहाँ पे मैं टैब दबाऊँगा. आफ्टर प्रेसिंग टैब आई विल राइट, आई डोंट नीड टू राइट p in the brackets. I write filter colon blur. Blur is a function, and we'll write 2px. Yep, it is blurred. All of it is blurred. Very nice. Semicolon डाल देंगे. And now we've changed the canvas. So what is the canvas? Again guys, if you notice, ये border blur नहीं हुई है, सिर्फ ये canvas blur हुआ है. So this is the canvas. If you notice, the white and the brown color are more and more, they are blurry. They're more blurry now. थोड़ा zoom करके दिखाता हूँ. So you can see this black part is a little bit, it is clearer than this part. Clearer, less blurry. Yeah. So हमने अभी डाल दिया filter property with the value blur 2 pixels. What if I write 2 0? It will be more blurry. You can immediately see the difference. Yeah, very cool. Let's go to the next step. This has 45 steps only, 43 steps only, and we've already reached the 35th step. Now what will we do now? So we'll create a rule that targets both 1 and 2 and increase their blur effect by 1 pixel. तो हमने पूरे कैनवस पे तो ब्लर डाल दिया, बट मुझे सेपरेट 1 और 2 पे भी थोड़ा ब्लर और करना है. तो मैं क्या करूँगा? dot 1 comma space dot 2 dot 2, then space, then curly brackets. Inside these curly brackets we will write, what will we write?
let me think. So it starts with P, the property. What is the property's name? I'll have to scroll and check. So it's called filter. Yes, my mistake. So we'll add the filter, and inside this we'll use the blur function, and we'll write 1px. And 1 and 2 are more blurry now. I can't see. Let's see. इसे 10 डालते हैं. Yep, 1 and 2 are more blurry, are blurrier than this. क्योंकि मैंने 10 डाल के देखा तो मुझे difference दिख गया. If you notice, this is blurry, but this is less blurry क्योंकि हमने दो ही classes को select किया है. Done. Great. Yep. Increase the blur of dot 3 by 2 pixels. तो इन दोनों का हमने dot 1 and dot 2 का blur 1 pixel किया. अभी इसका हम 2 pixels करेंगे. So what I'll do is I'll copy the filter value, blur 2 pixels, and I'll paste it here. हो गया काम. क्योंकि वो हमने 2 pixels हमने canvas पे भी अप्लाई किया था. So हम लोग separate element पे भी अप्लाई करें, so you can just copy and paste it. Now on to step 37. The rectangles are too small and their edges don't have the soft quality of a painting. Yes, that is true. Rectangle they're smoother. We don't have sharp edges in paintings, or maybe not in his paintings. Maybe there are, but yeah. Increase the area and soften the edges of dot 1 by setting the box shadow to 0, 0, 3 pixels and color. Okay, so this is the left corner, the top corner, the bottom corner, and the left and the right corner. Maybe let's find out by using the box shadow. We did come across this x offset, y offset, blur radius, and so these are x and y offsets. Sorry, these are not pixels. So I'll write it down and I'll show it to you, and I'll also experiment with it so that you can understand what I'm saying. So what I'll do is dot 1. Are we inside dot 1? Yep, we are inside dot 1. I don't need to declare it again. So हम लोग dot 1 के अंदर लिखेंगे box hyphen shadow colon space. हम लोग box shadow 1 पे डाल रहे हैं. So we'll see the effect on this. So box shadow and values, I can copy this and I will paste it here and I'll put the semicolon. So this is the offset x, this is the offset y, this is the radius, the blur radius, and this is so these two are some radiuses. एक थोड़ा blurry दिखाता है कुछ I forgot its center radius, shadow radius. Let's find out. Blur radius property in CSS. So we have blur radius, yes. Box shadow, inside box shadow we have blur radius, and what is it called? We have spread radius, yes. So the first value is blur radius 3 pixels and spread radius. तो एक कितना पिक्सेल्स ब्लर करना है और दूसरा कितना स्प्रेड करना है, उसको उसकी जगह पे रखना है या फिर उसको थोड़ा और स्प्रेड करना है. So we're going to add, yeah, we added 3 pixels, blur radius and spread radius, and this is of course the color. What is the difference? Let's try and remove this and see for ourselves. मैं preview यहाँ पे open कर देता हूँ तो दिखेगा. So the mouse is over here. What I'll do is I can see, I did see the difference. थोड़ा और blurry हो गया था. Well, and the size had changed because of the drop shadow, box shadow. And the color is the same. That's why it looks different. What if I change the color to FFFF? Another F. You can see the white color of this. So yeah,
EFB 672 is probably 762 is probably the value of the same color as 0.1, तो उसकी वजह से वो थोड़ा ज़्यादा ब्लर दिखेगा, ज़्यादा कर्वी दिखेगा. इन एनी केस हमने बॉक्स शेडो यूज़ करके एजेस को थोड़ा सॉफ्टन कर दिया और वो सेम कलर डाल दिया तो वो और क्लियर लगता है और कर्वी लगता है. नाउ वी आर बैक and the code is of course correct. I did not add the semicolon but it still accepted it. Interesting. But you can see there is a semicolon. Guys, don't forget to add a semicolon. Your code may or may not work when you're actually working on a project because you forgot to add a semicolon. So now we'll add the declaration for the next class which is 2. So 2 के अंदर तो हम hey will write box. I don't need to write all of that. I can copy it. So I'll copy these values and I'll change them according to this step. So paste. Scroll up. Okay. Box shadow declaration for 2, but from color, so we'll keep these values: offset x, offset y, blur radius, spread radius, but we'll change the color from EFB 762 to 8F 0401. Why? Because well, 2 has a different color, so it stands to reason. Control enter. Yep, we're good to go. Nice. It's coming together. हम लोग यहाँ नए टैग में ओपन करके रखते हैं because the size is too big, 500 pixels. Yes, that is good, but it's still not there yet. तो देखते हैं अभी और क्या बाकी है. We haven't reached the 45th step yet. So अभी हम लोग थर्ड के लिए डालेंगे. So we already have the 3 open 3 और इसमें हम लोग प्रॉपर्टी डालेंगे box hyphen shadow colon and we'll paste it. Oh, I did not need to. So यहाँ मैं paste कर दूँगा box shadow की values को and we'll add the spread radius and blur, change the blur radius and spread radius to 5 pixels and we'll change the color to B20403. Yep, I can see it. 5 pixels, the difference. It is blurrier than these two. Blurrier, curvier, it's more natural than these two. Okay, now we're on step 40. The corners of each rectangle are still too sharp. That is true. Yes. So round each corner of dot 1 element by 9 pixels using the border radius property. Wow. So border radius and we'll use 9 pixels. I don't need to mention the pixels. I will simply write 9. So border radius 9 semicolon. Done. And you can see the border radius has changed. But you know what? What if I write 90? क्यों नहीं हुआ कुछ? Maybe I'm missing something. Border radius property element by 9 pixels using the border radius 900. Nothing yet. 9000. Maybe I'll have to open the preview here. Or if I remove this altogether, do we see any changes? Nope. Maybe because it's too blurry that we don't see any change. What if I write px? Yep, the moment I wrote px, so you have to mention px pixels, guys. I didn't mention the px, but it let me go for that step. It didn't even say that it let me go. It let me go anyway. But you have to mention the pixels for this to take an effect. हमने डाल दिया border radius 9 pixels और आपको ये curve दिख रहा है. अभी मैं इसको 90 कर दूँ तो पूरा it will look like this. That is good. So border radius हमने सिर्फ left की नहीं की, हमने right की नहीं की, हमने चार point की कर दी है. Anyway, that is much curvier, if that is such a word. Now we'll use border radius again for the second one, the number 2 selector,
and set its top left radius and bottom right radius to 80 pixels and top right radius and bottom left. Oh my god. Top right and bottom left. What? Let's find out. So what will it be for first? So 8px थोड़ा यहाँ पे करते हैं. Semicolon भी डाल के रखते हैं. We'll have to experiment a little. 10px. Okay. It did do something. उसने दोनों साइड से कर दिया. Interesting. So if I follow the syntax I used for margin, then these two values, so this should be the top value, then this will be the right, then this will be the bottom value. But that's for margin. What will it be for these? Are we supposed to write top left after border radius? Let's find out. So top left and bottom right. So top left and bottom right. इन दोनों की values. Top hyphen left. That is simply not true. So I think हम लोगों को चार वो चार values के साथ ही खेलना है. Let me write px, copy and paste. Oh, sorry about that. Paste. Okay, let's see if that works. क्या दिखता है? Let's look at the preview. ऐसा दिखता है. In the meanwhile, I'll save this. Nope. I can't see a difference. Maybe it will help me. I'll have to check for a hint. That worked. That worked. So 8 pixel for the first one should be the top left. So top left, then top right, then bottom left, and then bottom right. Yeah. But no, हमने top left और bottom right का एक 8 pixels रखा है. With that logic, this is top left and this is bottom right. Oh. So then what are you and what are you? Which one are you? What if I write 100 here? Let's go to the preview. Okay, so that is 100 pixels. So that is bottom left. So the last value is the bottom left. So top right, then top left, top right, bottom right, and then bottom left. That must be the way it goes. Great. Next step, 42. We only have 3 steps left now. Amazing. That is just spectacular. And what does this say? So the border radius property accepts up to 4 values to round the top left, top right, bottom right, and bottom left corners. Okay. Yeah. Same like box shadow I used. Yeah. हाँ पढ़ा, ये मैंने खुद figure out करके दिया, खुद figure out किया, and now it's explaining to me. Anyway, doesn't matter who's holding a grudge. I'll copy this. Where did it go? Border radius 8 pixel, 10 pixel. सिर्फ इतना लिखते तो भी हो जाता. Interesting. So ये मैं copy कर लूँगा. I will go down, scroll down. The border radius property accepts 4 values. It does. We found that out by ourselves. To round the top left, top right, bottom right, and bottom left corners. Round the top left corner of dot 3 by 30 pixels. अच्छा अभी वो अच्छा चारों के 4 values का लिखा है. Okay, but we know. So we have top left first. Top left की value क्या लिखने वाले हैं? What? So we'll write 30 pixels for top left, then we'll go to top right का लिखेंगे 25. I just copy this, paste. Now
for bottom right. So top left, top right, then bottom right. So bottom right is 60 pixels and bottom left is 12 pixels. Works. Yep. It is uneven and these are the exact values. Great. And it works. Rotate each rectangle to give them more of an imperfect hand painted look. Rotate each rectangle to give them. तो हम लोग थोड़ा वो angle adjust करेंगे so that it's more imperfect. It's not, it looks more imperfect and less perfect. Hand painted look. Use the transform property on the dot one selected to rotate it counterclockwise by 0.6 degrees. Okay, so हम लोग transform property का use करेंगे. Transform, not transform. थोड़ा scroll करूँगा तो आप लोगों को नहीं दिख रहा है. So this is what I'm writing. Yup, that's much more visible. Now I see it. Sorry guys. So for transform property, we will rotate it counterclockwise. So I'll just write 0.6 DEG. Will that work? Let's see. Or are we supposed to add the rotate function? It's for 1, not 0.6, 0.6. 60 करते तो थोड़ा दिमाग खुलेगा. अच्छा, कुछ हुआ ही नहीं. So we're not writing it correctly. 60 लिखते तो कुछ नहीं होता. Counterclockwise by 60 degrees. 0.6 degrees. Oh, not dot. 0.6. We don't. What is this? Okay, bye. I can't see whether it has changed. What if I add a rotate function? Will it work then? DEG. Yep, it moved. It did. यहाँ पे मैं 90 लिखता हूँ. Yes, so we were supposed to use the rotate function inside the transform property. Yep, makes sense. I'll put it to 0.6 again, but when I pressed enter, command enter, it said no. Why does it not? Acha, because we're supposed to go counterclockwise, so minus 0.6 degrees. Yeah, makes sense. Left करना है ना, right नहीं करना है. Okay, yeah, I understand. Rotate the dot 2 element clockwise. We're going to make it clockwise, so no negatives. And what I'll do is I'll copy that properties value, and from minus 0.6 I will change it to. It also copies the line break. I hate it. So instead of 0.6 and minus 0.4, we'll change it this way. We'll have to be quick about this because ये तो चीज़ preview दिखाता ही नहीं है. Yep, I can see the preview. So yep, there is an effect, and our code passes. Now we're on the last step. Last step में हम लोग इसको counterclockwise या clockwise rotate करेंगे and think we'll be done. With this final step, your Rothko painting is now complete. Nice. So for dot 3, again tab, paste that. Oh, come on. Paste that. What? Whatever happened? You know what? I'll copy this from here till here, so it doesn't copy the line break. Tab, of course. And instead of, we're going to make it counterclockwise, so we'll add a minus sign. Yep, टेढ़ा दिख रहा है. Yep, counterclockwise makes sense. It has been rotated, and we're done. Yay!
you just completed learn the CSS box model by building a Rothko painting, donate now. So it's asking us to donate now, but no thank you. Okay, ask me later. Great. So we have the preview for the next thing we have to build. But before I go any further, guys, I have something to show you. So we are a new channel. हम लोग ने अभी शुरू किया है, हार्डली 1-2 महीने हैं हुए हैं. अप्रैल में शुरू किया था, बिगिनिंग ऑफ अप्रैल. So I want to show you guys something new. So we're going to take a quick detour, maybe half an hour or so. So don't go anywhere, guys. We'll still go through freeCodeCamp, but आपको थोड़ा गूगल शीट्स के बारे में भी बता देता हूँ एंड हम लोग कैसे ये सब करते हैं. So I'll open this new tab. I'll open a new tab. I can close these diagrams. Basically आपको दिखाता हूँ हम लोग गोल्स कैसे सेट करते हैं और हमारे गोल्स कैसे यहाँ पे हमें पहुँचते हैं, और थोड़ा आपको दिखाता हूँ शीट्स में हम लोग क्या क्या करते हैं, हम लोग शीट्स में कैसे मेंटेन करते हैं कि क्या दिखना चाहिए, क्या दिखना चाहिए. हम लोग शीट्स में मेंटेन करते हैं कि क्या क्या हम लोग दिखाएंगे, क्या क्या हमारे गोल्स है, क्या क्या हम लोग वीडियोस बनाएंगे, किस चीज़ों पे वीडियोस बनाएंगे, उसका डिस्क्रिप्शन कहाँ से आता है, आप जो वीडियोस देखते हैं उसका डिस्क्रिप्शन कैसे बनता है. you'll see at all of that. you'll see all of that. So मैं ओपन करूँगा sheets.google.com and this is my profile. Sorry about that. So I'll open the profile with which we use all of this. So just give me a second. मैं यहाँ से करूँगा command N for new window and I will make it full screen over here. So इसके यहाँ पे जाते हैं. I'll bring this window and I'll make it full screen for you guys. Yes, great. Now I'll write sheets.google.com. थोड़ा zoom कर देता हूँ so it looks much better. Yes. Now we have spokenessays. That is the website. That is the sheet we use. And you can see हमारे यहाँ to do's वाली लिस्ट है, तो ये कौन कौन क्या करेगा उसके बारे में हम लोग लिखते रहते हैं. Then we have goals. So यहाँ पे goals लिखे होते हैं कि हम लोग क्या क्या goals हमारे होने चाहिए, कि इतने viewers 12 अप्रैल तक आ जाने चाहिए, या मतलब these are the guesses कि हम लोग guess करते हैं कि जिस तरह से हमारा growth चल रहा है उसके हिसाब से हमारे महीने के एंड में या फिर इस तारीख तक ये हो जाएगा. So आप टॉप में देखेंगे तो ये सारी एंट्रीज़ बाकी दिखा रहा है. ओह सॉरी, ये जितनी भी एंट्रीज़ है ये सारी एंट्रीज़ खाली दिखा रहा है. सो बिफोर आई एक्सप्लेन टू यू व्हाट दिस इज़, मैं आपको स्लोली समझा देता हूँ. सो दीज आर गोल्स. तो हम पहले हेडर रो पे जाएंगे. एक्सक्यूज़ मी. सो वी हैव गोल विच इज़ ऑटो जनरेटेड. वी हैव व्हेन, तो गोल कब फिनिश हुआ. तो फॉर एग्जांपल YT चैनल वॉच आवर्स 30. सो आपने सुना होगा हमारे वॉच आवर्स के बारे में, या फिर आपने गूगल पे वॉच आवर्स कैसे बढ़ाते हैं उसके सारे वीडियोस भी देखे होंगे. सो हमारे चैनल के वॉच आवर्स 35 कब पहुँचे, तो यहाँ पर लिखा है व्हेन. सो 25 अप्रैल. सो हमारे चैनल को हमने शुरू किया था 9 तारीख को, 9 अप्रैल को, एंड 25 अप्रैल तक हमारे 35 घंटे हो गए थे. और उस टाइम पे हमने गेस नहीं किया था, और मे बी देयर वाज अ गेस बट मे बी वी डिडंट ऐड इट. बट एनीवे मूविंग ऑन. यहाँ देखते हैं, यहाँ पे हमने गेस की भी एंट्री की है. तो इफ़ यू सी दिस चैनल के 1000 व्यूज़. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे चैनल के 1000 व्यूज़ 16 अप्रैल को हो गए थे, और हमने गेस किया था कि 16 अप्रैल को हो जाएंगे, एंड इट एक्चुअली हैपेंड. सो द सेम वे आई कैन गो डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन, एंड यू कैन सी हियर यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है. दैट मीन्स ये अभी तक हुआ नहीं है, या फिर ये गेस्ट डेट आने और जाने के बावजूद भी ये गोल अभी तक रीच नहीं हुआ है. सो व्हाट आई विल डू इज़, ये मुझे चेक करना हो कि हमारे शॉर्ट के फर्स्ट शॉर्ट, मतलब हमने जब अभी तक जितने भी शॉर्ट्स पब्लिश किए हैं उसमें से कोई एक भी शॉर्ट जो वो पहला शॉर्ट होगा जिसके 500 व्यूज़ आए हैं कि नहीं. सो व्हाट आई विल डू इज़, फर्स्ट वीडियो रेडी, फर्स्ट वीडियो अपलोडेड. अच्छा, first reel 100 views, first short 100 views, channel 500 views. Okay, so what I'll go do is I'll go to studio.youtube.com
studio.youtube.com। स्टूडियो पे गए, थोड़ा जूम कर देता हूँ, आपको क्लियरली दिखेगा। देन वी गो टू एनालिटिक्स हेयर, एनालिटिक्स आपको क्लियरली दिख रहा है, yes you can see it. So in the last 28 days we got these many views, but you know what, let's not get distracted, पहले पढ़ते हैं। हमें शॉर्ट के व्यूज़ कितने हैं वो देखना है। तो एनालिटिक्स में कंटेंट में जाऊंगा मैं और मैं शॉर्ट्स पे क्लिक करूंगा, तो मुझे शॉर्ट्स की वैल्यू दिखाएगा। एंड इंस्टेड ऑफ लास्ट 28 डेज आई विल चूज़ लाइफ टाइम। तो ये लास्ट 28 डेज यहाँ पे दिखाता है टॉप राइट में, बिलो एडवांस्ड मोड। सो यहाँ पे मैं लास्ट 28 डेज़ की जगह मैं लाइफ टाइम कर दूंगा। सो मैं लाइफ टाइम में व्यूज़ दिखाएंगे। तो भाई टोटल जितने भी शॉर्ट्स हैं उन सबको मिला के मेरे व्यूज़ हुए 4.4 के। फिर क्या दिखाता है, शोन इन फीड। तो ये भाई फीड में इतनी टाइम्स ये कंटेंट दिखाया गया था, इतनी बार ये कंटेंट दिखाया गया था, मतलब लोगों को इम्प्रेशंस पड़े थे, इतने लोगों ने, टोटल लाइक्स कितने, अब तक जितने सारे शॉर्ट्स पब्लिश किए उसमें से टोटल लाइक्स कितने। देन व्हाट डज दिस से, सब्सक्राइबर्स। तो गाइज मुझे कैसे समझ आया कि ये क्या होता है, तो मैंने यहाँ पे जब मैं माउस को यहाँ पे ले जाता हूँ, इफ आई ड्रैग द माउस, when I drag the mouse it will show me a box will appear and it will tell me the meaning. So the change in total likes found by subtracting likes removed from likes added for the selected date range, region and other filters prior to September 1 2012, likes removed were not subtracted. So I see, so there is some more information to be added. यहाँ पे दिखा रहा है कि likes added and likes removed दोनों का well sum करके दिखाता है, not sum, subtraction. So मैथ या इट यूजेस सम मैथ वेयर जितनी लाइक्स है और डिसलाइक्स है, तो वो लाइक्स में से वो डिसलाइक्स को सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे दिखाएगा फ्रॉम द लाइक्स एडेड फॉर द सिलेक्टेड डेट रेंज। और वो किसका दिखाएगा, तो भाई हमने ऊपर जो डेट रेंज सिलेक्ट की है, हमने लाइफ टाइम सिलेक्ट किया, मतलब हमने जिस दिन से ये चैनल बनाया था और आज की तारीख तक, आज की तारीख कुड बी एनीथिंग, 10 years फ्रॉम नाउ कुड ऑल्सो बी 10 years। सो लाइफ टाइम में कितनी बार लाइक्स आई है और उसमें से कितनी लाइक्स डिसलाइक्स मिली है, उसको सब्ट्रैक्ट करके जो नंबर आता है वो वहाँ पे दिखता है। द सेम वे यू कैन ऑल्सो लर्न दिस फॉर योर बाय योर सेल्व्स। यहाँ पे सब्सक्राइबर्स पे लेके जाओ एंड यू प्लेस द माउस ऑन दिस, प्लेस द पॉइंटर, यू कैन ऑल्सो कॉल दिस ए पॉइंटर। So the change in total subscribers found by subtracting subscribers lost from subscribers gained in for the selected date range and region. So obviously we don't have 19 subscribers, but जितने गए और जितने आए उन सबको काट के मिला के शॉर्ट्स से हमें 19 सब्सक्राइबर्स मिले हैं आज तक। That was an SMS message, and you can read this for yourselves too. The change in total subscribers found by subtracting subscribers lost from subscribers gained for the selected range and region. So आए गए बट वो सबको सब्ट्रैक्ट करके आज तक कितने आए हैं और अभी तक कितने सब्सक्राइब्ड है उनकी लिस्ट दिखा रहा है। सेम वे आई कैन ऑल्सो टेक द माउस, हाउ मेनी टाइम्स कंटेंट वाज शोन इन द शॉर्ट्स फीड, व्यूज़ पे ले जाएंगे तो टोटल व्यूज़ फॉर द सिलेक्टेड डेट रेंज रीजन एंड अदर फिल्टर्स। सो टोटल व्यूज़, जितनी भी शॉर्ट्स पब्लिश किए उसके व्यूज़, कितने इंप्रेशंस, यू कैन सी दिस चार्ट। एनीवे हमारा क्वेश्चन क्या था, तो भाई फर्स्ट शॉर्ट के 500 व्यूज़ कहाँ से आए, मतलब किस शॉर्ट के 500 व्यूज़ पहुँचे हैं अभी तक। सो यू कैन सी हियर, यहाँ पे मुझे ये डैशबोर्ड पे दिखा रहा है कि यार अभी तक कोई भी शॉर्ट के व्यूज़ नहीं पहुँचे। सबसे हाईएस्ट व्यूज़ पीपल लॉस्ट ऑल फेथ में है 232, बट नथिंग एल्स, नो अदर शॉर्ट। आई कैन ऑल्सो क्लिक ऑन सी मोर और यहाँ पर मैं देखूँगा तो एक इम्प्रेशंस इसके पहुँच गए 408, विच इज़ स्टिल नॉट क्लोजर टू 500, बट इसके व्यूज़ I'll have to add that. Oh my god. What? So we have these these fields too. मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ. Shown in feed, viewed. So I think we want viewed. Cards, premium, revenue, overview. Yep, I think we should use viewed. So viewed versus swiped away. How long is it showing the shortcuts? So 83% of the time it was viewed. Anyway,
वी कैन ऑल्सो लुक एट व्यूज़ इटसेल्फ, और यहाँ पे मुझे दिखा रहा है 2026। अभी मुझे इसको करना हो तो मैं क्या करूँगा, इफ़ आई क्लिक ऑन व्यूज़ तो देन इट विल टेक मी टू द टॉप व्यूज़। सो दिस इज़ फ्रॉम हाई टू लो। सो अभी हाईएस्ट वैल्यू दिखा रहा है मुझे व्यूज़ की, सो दैट इज़ 238। सो वी स्टिल हैवंट रीच्ड दिस गोल, सो दैट्स वाई वी हैव अ क्वेश्चन मार्क अनफॉर्चुनेटली। देन हम लोग ये वाला चेक करेंगे, फर्स्ट वीडियो 500 व्यूज़। एक भी वीडियो अभी तक जो हमने पब्लिश किया उसके 500 व्यूज़ आए हैं कि नहीं। सो मैं क्या करूँगा, इंस्टेड ऑफ शॉर्ट्स हेयर I'll filter it to, not I'll just write videos. What does it say? Nope. video, content type videos. Yep, that's exactly what I was looking for. And let's see, इसमें भी views है but no video has crossed 500 unfortunately. So ये भी question mark रहेगा। बाकी सारे गोल्स यू कैन सी, हमारे इंस्टाग्राम पे 50 फॉलोअर्स आ गए थे 27 अप्रैल तक, ट्विटर पे 10 फॉलोअर्स आ गए थे 28 अप्रैल तक। यू कैन सी हमने गेस किया था 20 अप्रैल तक आ जाएंगे, लेकिन 8 दिन बाद आए। देन अभी हम ये चेक करेंगे, फर्स्ट वीडियो 1000 व्यूज़। अभी ये देख के समझ आ रहा है कि अगर कोई भी वीडियो के 500 व्यूज़ भी नहीं आए तो भाई 1000 व्यूज़ कब आएंगे, या फिर ऑब्वियसली नहीं आए। एंड वो हमने गेस डाला था 15 मई को, 15 मई। I'll scroll up a little bit, शायद आपको नहीं दिख रहा है, शायद टेक्स्ट की साइज़ थोड़ी छोटी होगी। यू नो व्हाट, लेट मी जूम। हाँ, इज़ दैट क्लियर, इज़ दैट बेटर? प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट्स गाइस। मैं थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ यहाँ पे भी तो मुझे कमेंट्स दिखें। हाँ, ओके। एनीवे, so first video 1000 views, unfortunately nothing yet, and we have a comment. What does the comment says? What does the comment say? So यहाँ पे भी मैंने comment को overlook कर दिया, so let's read them, but इसमें comment नहीं है। Okay, so what does the comment says? What does the comment say? Got 300 views in first 10 days, so push the goal estimate to 20 April to 30 April, which they did. So ये instruction था from probably Yogen sir to Kushagra, because at the time Kushagra used to edit this goals sheet. And for the same thing, इसमें भी वही है text, got 300 views in first 10 days. But उसके बाद 100 views किसी को नहीं पहुंचा unfortunately. You can see the top views 335 है. Anyway, so this will also be a question mark. Again, short, अगर short के 500 views नहीं पहुँचे तो 1000 views तो पहुँचने की बात हो गई. So leave that. इसमें भी comments डालने ज़रूरत नहीं है. Then we go to first video 2000 views. Obviously, nope. Then we have channel 5000 views. We reached channel 5000 views on 10th May, and that is an achievement. Then first short 5000, no way. Channel 10,000. You know what? Let's find out. Channel के 10,000 views हुए कि नहीं. तो हम लोग क्या करेंगे? I'll simply remove this filter. And यहाँ पे मुझे दिखा रहा है views top. तो ये कौन से content का है? तो देखते हैं हम लोग. यहाँ पे मुझे full video भी दिखा रहा है, shorts भी दिखा रहा है. True Brothers in the Brain Virus, this, that, Zana Chala, Crystal Knocked, Quirkiest Profiles, Holocaust, तो ये दिखा रहा है. Unfortunately वो live का नहीं दिखा रहा है, maybe content live का, क्यों पता नहीं. But we can also find that out. But it says, if you don't want to look at this, we can also go here. When I can click on all, अगर मैं all करूँगा तो मुझे दिखा देगा कि यार हमारा कितना है, हमारे कितने व्यूज़ है. टिपिकल व्यूज़ दिस 78.8k impressions in the last 59 days, मतलब all time, and views from impressions, watch time from impressions, etc. ये सब है. This is a funnel. Anyway, what I am looking for is the number of views in our lifetime. So यहाँ पे हम लोग जाएंगे वापस, और यहाँ पे दिखा रहा है शॉर्ट्स वीडियोज़ एंड लाइव स्ट्रीम को मिला के हमारे 7589 व्यूज़ हो चुके हैं. सो वी हैवंट रीच्ड
10,000 views yet, but now तो हमने 5,000 views पहले ही reach कर लिए थे. Is that what it means? Yeah, that makes sense. 4,000 into 2,000, 6,000 views. So we did reach that, but we haven't reached 1,000 views yet for the channel. Also, I guess 10th May का था. आज कौन सी तारीख है? We've almost reached. What date is it? We're on June 8 right now. Almost a month. और अभी तक वो target reach नहीं किया. So next we go to total video, 5,000 views. So let's check that. Total video 5,000 views. So total videos यहाँ से ही मुझे दिखा देगा कि videos का 5,000 views अभी तक नहीं पहुँचा है. So that will also stay a question mark. ये first reel 2,000 views हो गया था. Reel that's very nice. Instagram पे लोग ज़्यादा active है. Probably हमारे viewers से ज़्यादा Instagram भी ज़्यादा चलाते हैं. Target audience. Then we have first shot 2,000 views. Obviously not. अभी तक तुम लोग 500 भी नहीं पहुँचे. First video 5,000 views. Again no. Channel 100 watch hours. We did reach 100 watch hours. So let's go here. तो हम लोग filter करेंगे. हमें क्या देखना है? Content type की जगह हमें देखना है watch time hours. So यहाँ पे मैंने open किया. This is in advanced tab, advanced mode. मुझे अगर ये ओपन करना है सो आई क्विकली शो यू. हम लोग यूट्यूब स्टूडियो पे गए. यूट्यूब स्टूडियो में एनालिटिक्स में गए और एनालिटिक्स में यहाँ पे एडवांस्ड मोड पे गए. व्हेन वी ड्रैग आवर माउस एंड वी क्लिक ऑन दिस इट विल ओपन द एडवांस्ड मोड एंड वी कैन व्यू. हमें वी कैन चेक बाय मेट्रिक्स हमें क्या देखना है. सो राइट नाउ आई वांट टू लुक एट वॉच टाइम आवर्स. तो मैंने वो चेक किया, उसको सिलेक्ट किया एंड व्हाट डज इट से. सो भाई यहाँ पे दिखाएगा व्यूज़ वॉच टाइम आवर्स ओवर हेयर. व्हाट इफ़ आई सिलेक्ट, या आई डोंट नीड टू सिलेक्ट एनीथिंग एल्स. सो अब तक यहाँ पे दिखा रहे हैं 140 हुआ है. दिस इज़ द टोटल ऑफ ऑल द वीडियोज़ एंड द शॉर्ट्स एंड एवरीथिंग. एंड फॉर द चैनल वी हैव क्रॉस 100 वॉच आवर्स. 140 वॉच आवर्स. डैम. तो अभी हम देखते हैं हमने 100 कब क्रॉस किया. सो मैं क्या करूँगा, मुझे थोड़ा टाइम फिगर चेंज करना पड़ेगा. सो व्हाट आई विल डू इज़ 140.3. सो लाइफ टाइम की जगह मैं लिखूँगा लास्ट 28 डेज़. 28 दिन में 70 थे. ओके. और 7 दिन पहले 47 थे. 4740. सो एक वीक पहले के टाइम पे जून के सम डेज़ इन जून. तो मैं क्या करूँगा, मैं कस्टम का इस्तेमाल करूँगा, कस्टम फंक्शन का या कस्टम ऑप्शन का. एंड व्हाट आई विल डू इज़ यहाँ पे मैं लिखूँगा 9 अप्रैल. सो 5 की जगह 4. सो 9th अप्रैल से लेकर मैं लिखूँगा 1st जून. आई कैन ऑल्सो यूज़ द माउस. सो टिल May 31 फ्रॉम 9 अप्रैल टू May 31 हमारे कितने व्यूज़ है दिखाओ. सो इट इज़ 99.6. हाँ मतलब या 0.4 आवर्स नेक्स्ट डे ऐड हुआ है. सो आई क्लिक ऑन कस्टम अगेन और मैं यहाँ पे जाऊँगा एंड आई instead of 31st May I'll write 6th and 1st June. Let's apply that. देखते हैं 110 हो गया. What? Interesting. Yeah. So I think I can put 1 June as the date. So when is 1 June? So I'll write 6/1. Guys, this is a neat trick. हम लोग अगर ये दो डालेंगे तो ऑटोमेटिकली डाल देगा. इफ़ यू वांट मी टू टीच यू, इफ़ यू वांट मी टू एक्सप्लेन टू ये हमने कैसे किया है तो हम दिखाएंगे. अनफॉर्चुनेटली इसमें क्वेश्चन मार्क डाल के फॉर्मेटिंग बिगाड़ दिया होगा. 1/6. यप, फॉर्मेटिंग बिगड़ गया. सो व्हाट आई विल डू इज़ आई विल कॉपी एंड पेस्ट दिस एंड देन आई विल राइट 6/1. Oh, so that's this will sound like so. First will come the month and then the first will come the date and then the month.
1 जून, सो पहली तारीख जून, सो 1/6, सो जब 1 लिखते हैं तो डेट एंड स्लैश के बाद 6, सो DDMM के वैल्यूज़ हैं। अभी वाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम लोग को ईयर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि हम इसी करंट ईयर में, सो ऑटोमेटिकली वो करंट ईयर की वैल्यू ले लेगा। एनीवे, सो चैनल 100 वॉच आवर्स 1 जून को हुए थे। ऑफ कोर्स गाइज, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये यूट्यूब एनालिटिक्स का दिखा रहा है। अभी यूट्यूब में एक अर्न करके भी टैब होता है। अभी यूट्यूब के अर्न टैब में हमने कुछ वॉच आवर्स है, पब्लिक वॉच आवर्स, वो अभी तक रीच नहीं किए। इफ़ यू थिंक अबाउट इट, वी हैव रीच 111, बट ये नंबर आपने नोटिस किया होगा, ये 111 दिखा रहा है यहाँ पे। इफ़ यू थिंक दिस इज़ ऑल टाइम, ऐसा कुछ नहीं है, दिस इज़ लास्ट फॉर लास्ट 365 डेज़। और अगर मैं इसको मैं लाइफ टाइम कर दूँ वापस, सो यू विल नोटिस दैट इट्स 140 एंड दिस इज़ 111। सो देयर इज़ अ डिफरेंस। और वो ऑन टैब का जो ऑन टैब के अंदर जो पब्लिक वॉच आवर्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, एंड दिस increases too over time, so nothing to worry. But yeah, we have noticed this and we are a new channel, we're still learning, we're still trying to understand. हमें भी कुछ पता नहीं हम लोग क्या मतलब हमें भी पता नहीं है कि कौन सा मेथड काम करेगा, कौन सी चीज़ हमें रिजल्ट्स देगी, हमें कोई आइडिया नहीं है। सो वी आर स्टिल ए न्यू चैनल and we're still trying to learn things, we're still trying to understand how this thing, all this works. So public watch hours 111 हुए हमारे चैनल के, and analytics में यहाँ पे दिखा रहे हैं 140.3. anyway, total shot 5000 views, total shot. so I think ये अलग है total shots. तो देखते हैं सारे शॉट्स को मिलाकर कितने व्यूज़ हुए. so again I'll change this from watch time to what will I do? So I'll go to more metrics and I'll go to views by content. मुझे shorts देखने हैं तो मैं shorts के लिए क्या करूँगा? I'll use a secondary metric. Okay. Interesting. Okay. These are great metrics. मुझे शॉर्ट्स ढूंढना है, मैं क्या करूँगा? नो व्हाट, आई क्लिक ऑन दिस, आई क्लिक ऑन सब्सक्राइबर्स, विल दैट गेट मी एनीथिंग? पहले कुछ टोटल तो दिखा रहा था वो, अब क्यों नहीं दिखा रहा? सो व्यूज़, शॉर्ट्स दिखाने तो मैं क्या करूँगा? फिल्टर्स करूँगा मैं, या आल्सो आई यूज़ अ फिल्टर, कंटेंट टाइप शॉर्ट्स. सो आई यूज़ अ फिल्टर्स, तो मुझे सिर्फ फिल्टर्स का टोटल दिखाएगा. सो तो फिल्टर में भी अनफॉर्चुनेटली हम लोग 500 तक नहीं पहुँचे, तो दिस विल ऑल्सो स्टे अ क्वेश्चन मार्क. ट्विटर 50 फॉलोअर्स, वो हमने चेक किया नहीं है. सो आई ओपन twitter.com. आई एम ऑटोमेटिकली लॉग्ड इन, आई एम ऑलरेडी लॉग्ड इन. आई विल गो टू माई प्रोफाइल, यू कैन गो टू योर प्रोफाइल दिस वे. यहाँ पे क्या दिखा रहा है? 404 फॉलोइंग इन 32 फॉलोअर्स. अनफॉर्चुनेटली वी हैवंट रीच दैट नंबर येट, 50 फॉलोअर्स. तो वो भी देखते हैं वो कब होता है. गेस इज़ 15 मई. वी डोंट चेंज दिस नंबर क्योंकि हमने जिस तारीख को ये डाला था वो हमने कुछ सोच के डाला था कि भाई 15 मई तक हो जाएगा. देन वी हैव टोटल शॉट 10,000 व्यूज़. दैट इज़ इनसेन. अभी तक हम 5,000 नहीं पहुँचे, सो ऑब्वियसली 10,000 भी क्वेश्चन मार्क ही रहेगा. देन टोटल वीडियो 10,000 व्यूज़. सो मैं क्या करूँगा? इंस्टेड ऑफ शॉर्ट्स आई राइट वीडियो. अभी कंटेंट टाइप वीडियो के अंदर लाइव आ जाता है कि नहीं वो समझ नहीं आ रहा. नोप, लाइव नहीं आता है. सो लाइव स्लैश ऑन डिमांड. सो जो हमने लाइव वीडियोस जो पब्लिश किया वो क्यों नहीं दिखा रहा? इंटरेस्टिंग. I'll remove live for now because I'm not sure what I'm clicking on. But if we write total videos, तो भाई total videos में 10,000 views अभी तक नहीं पहुँचे. We haven't even reached 3,000, so that is not happening right now. Maybe in a few months, maybe. Total video 2,000 views. Yeah, not happening.
वेट 2000 व्यूज़ तो आ गया, टोटल वीडियो 2000 व्यूज़ नॉट 20,000, सो 2000 व्यूज़ तो हमने क्रॉस कर दिए थे, अभी वो देखना पड़ेगा कब क्रॉस किए थे. सो आई विल चेंज दिस चार्ट अगेन. व्हाट आई विल डू इज़ 2689 600 ना 700 व्यूज़ है, सो कस्टम आई विल गो टू दैट. और यहाँ पे मुझे मंथ्स भी दिखा रहा है, सो देन आई कैन एडिट माई सेल्फ. सो आई विल क्लिक ऑन अप्रैल में 1300 हुए थे, मई में 1300 एंड 1200, सो दैट इज़ या 2000 के ऊपर हो गया. अभी मई के अंदर कहीं पे हुआ था, सो अभी हमें जानना हो कौन सी डेट पे हुआ था, देन वी कैन यूज़ दिस. विल दैट नोप, दैट विल नॉट हेल्प अस. Show monthly. Yeah. Anyway, I don't understand this yet. So instead, I will go to custom और मैं यहाँ पे custom dates डाल के चेक करूँगा कि कौन सी dates है, कौन सी डेट पे हुआ था. So for this, I will go to 5 की जगह 4 9 what 492023. Great. So 9th April, that's when we started this channel. और हम देखते हैं मई में कहीं पे हुआ था. So let's, you know what, let's go with halfway there, halfway of half of May. So तब 2351 हो गए थे. Okay. A few more days before May, maybe 1 week. Let's say 2021. That's close. एक और दिन करके देखते हैं, तो हमें पता चलेगा एग्जैक्ट डेट कौन सी है. मई 9 से पहले एक महीने में 2000 व्यूज़ आ गए थे. इंटरेस्टिंग. 1962. सो वी हैव द विनर. मई 9 को हमारे टोटल वीडियो व्यूज़ हो गए थे 2000. सो 9 मई, फॉर 9 मई व्हाट आई विल डू इज़ आई विल राइट 9/5. अनफॉर्चुनेटली ये फॉर्मेटिंग अभी तक उसने इस पर कॉपी पेस्ट नहीं की गई है, सो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा. आई विल यूज़ कमांड ऑल्ट वी, इससे ये पेस्ट कर देगा वैल्यू फॉर्मेटिंग को, एंड इसने कर दिया पेस्ट. ग्रेट. नाउ वी गो टू टोटल वीडियो 20,000 व्यूज़. ऑब्वियसली नो. फर्स्ट शॉट 10,000 नो. फर्स्ट वीडियो 10,000 नो. चैनल 1000 सब्सक्राइबर्स. लेट्स चेक. So we'll go to, instead of this, we'll go to subscribers, and instead of custom we'll go to lifetime again. Lifetime करें या फिर 2023 करें, there's a difference, क्योंकि हम लोग का चैनल अभी 2-3 महीने, हम लोग के चैनल के 2-3 महीने ही हुए हैं. So even if we click lifetime, even if we click 2023, even if we click last 90 days, will still be it will still show us the same thing, क्योंकि उतना टाइम हुआ नहीं है. we're still a new channel. So let's go back. ये मैं वीडियोज़ वाला फ़िल्टर भी हटा देता हूँ. ये सब्सक्राइबर्स कितने और कहाँ से आए. सब्सक्राइबर्स बाय कंटेंट. यस. सो भाई सब्सक्राइबर्स 717 है. सब्सक्राइबर्स 717 आए हैं. अनदर वे यू कैन फाइंड आउट इज यू सिंपली गो टू द डैशबोर्ड, और यहाँ पे आपको सब्सक्राइबर्स दिखाएगा एनालिटिक्स में. यू कैन सी हियर टू 718 इज़ द करंट नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स. According to this 717, probably 1-2 निकल गए होंगे, 1-2 ने निकाला होगा. But you can check from here, channel analytics 718 and plus 40 in the last 28 days. So 718, we haven't reached 1000 yet, question mark. Channel 500 watch hours, nope, अभी तक नहीं पहुंचा है. We can put a question mark over this. Instagram 200 followers, let's find out. So I'll go to instagram.com. And we're logged in, of course. I'll scroll, I will zoom in a little bit more. That's him right there. Anyway, we'll go to profile, and we can see that we haven't crossed 200 followers. Twitter भी बंद कर देते हैं. So unfortunately no, but it was predicted that we will reach followers then. फिर ये देख लेते हैं. ट्विटर 100 फॉलोअर्स, नोप. चैनल 1000 वॉच आवर्स, नोप. वेट, नोप, सॉरी, दैट वाज फॉर 30th जून. अभी तक वो 30th जून आया नहीं है. 30th जुलाई, सितंबर आया नहीं है. सो वी कैन नॉट रीड दैट, वी कैन नॉट चेक दैट. we'll put a question mark over there yet. Now we'll go to
दिस ये क्या दिखा रहा है? सो ये अक्टूबर, सितंबर और अभी 15 मई दिखा रहा है. तो ये क्या है? चैनल 2000 सब्सक्राइबर्स, नोप. चैनल 2000 वॉच आवर्स, नोप. चैनल 2000 वॉच आवर्स, 202 आवर्स, 2 ये भी नहीं हुआ है, लेकिन 15 जून अभी तक आई नहीं है, सो वी कैन नॉट से. बट द वे वी आर प्रोग्रेसिंग प्रॉबेबली नॉट, बट लेट्स होप सो. और मैं स्क्रॉल करूँगा और शॉर्ट्स प्लस वीडियोस 100 पब्लिश्ड. येस, दैट वी डिड फिनिश दैट गोल. 15 मई को ही हो गया था. यहाँ पे गेस्ट लिखा था और उसी दिन हो गया था. वेरी नाइस. सो हम ये सारे गोल सेट करते हैं. दिस वॉज ऑल सेट बाय योगेंद्र सर. थैंक यू सो मच टू हिम. बिकॉज ऑफ हिम वी वर एबल टू मेक दिस शीट. एंड उन्होंने बहुत मदद की है ये शीट बनाने में. most of the time he was the one who told us, not most of the time, all the time he was the one who told us what the names of the columns will be. या वो खुद बना के दे देते थे. There were a lot of cases. Then we have videos, we have cool sites, we have polls, clips, everything. polls का अभी तक वो प्रोजेक्ट डेवलप नहीं हुआ है, बट वी ऑल्सो यूज़ क्लिप्स, शॉर्ट्स, रील्स, ट्विटर. ये हमने आपको दिखाया था. यहाँ पे मैं और कुछ केसी आपको कैप्शंस दिखाते थे. Then we have media. This is also good. This is when I used Blender to edit videos. जो हमारे वीडियोस हैं, जो आपने टॉप 10 स्कैम को शायद देखा होगा वीडियोस को, वो सारे वीडियोस उनके अंदर हम क्या क्या मीडिया डालते हैं, हम लोग क्या क्या डालते हैं, टेक्स्ट डालते हैं, एंकर फुटेज डालते हैं, मीम डालते हैं, लोगो डालते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. स्टेबल डिफ्यूजन, AI आर्ट वर्क डालते हैं. तो हम लोग क्या क्या डालते हैं उसकी हमने लिस्ट बनाई थी, और वो अप्रॉक्सीमेटली कितने होने चाहिए और वो सब डाला था, और उसके कोड्स क्या होने चाहिए. एनीवे, देन वी हैव मास्टर्स, वी हैव डिफरेंट वेबसाइट्स. मूविंग ऑन, हम लोग टू डूज भी यूज़ करते थे. एंड दीज वर द गोल्स वी हैड फॉर, वेल नॉट हैड, वी स्टिल हैव फॉर आवर चैनल. यू नो व्हाट, आई डिड नोटिस समथिंग व्हेन आई स्क्रॉल्ड बिलो. तो यहाँ पे भी कुछ टेक्स्ट है, ये भी कुछ गोल्स है, बट आई थिंक दीज गोल्स आर नॉट येट डिटर्मिन. अब लोग गेस भी नहीं कर सकते अभी के लिए कि ये कब होगा. बट आई कैन सी इंस्टाग्राम इम्प्रेशंस हमें देखना, तो हम क्या करेंगे. सो टू फाइंड आउट हाउ मेनी इम्प्रेशंस वी हैव रीच्ड, हम लोग अभी इस गोल को तो चेंज नहीं करेंगे, बट टू फाइंड आउट हाउ मेनी इम्प्रेशंस वी हैव रीच्ड विल गो टू Meta Business Suite. So to reach Meta Business Suite, to open Meta Business Suite, we write business.facebook.com. There's a typo, so it took me to Google search. Instead of full stop, I put a comma. So I'll write it again: business.facebook.com. Now you can see we have Meta Business Suite open. ये आपके में अलग दिखेगा अगर आपका अकाउंट अलग है. इफ़ यूर ए क्रिएटर फॉर योर अकाउंट, इफ़ यू मैनेज डिफरेंट पेजेस यूजिंग फेसबुक, तो यहाँ पे आपको स्पोकन एसेस की जगह आपके ब्रांड का लोगो दिखेगा और उसका नाम दिखेगा. एंड इट सेज हियर दिस इज़ ए बिजनेस अकाउंट, इट हैज़ ए फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेज. नाउ वी आर गोइंग टू गो टू इनसाइट्स. जो यूट्यूब पे एनालिटिक्स है वो फेसबुक में इनसाइट्स है. और जैसे मैंने इनसाइट दबाए, इनसाइट्स बटन पे पॉइंटर लेके गया और क्लिक किया, सो इट शोज़ मी ए प्रीव्यू. वेल, रिव्यू दिखा रहा है कि भाई योर लास्ट वीक इन रिव्यू. सो टेक अ मोमेंट टू रिव्यू एक्टिविटी इन इनसाइट्स फॉर स्पोकन एसेस फ्रॉम 27 मई टू 2 जून. ओके, तो भाई इस टाइम क्या हुआ. सो वी पब्लिश्ड 51 pieces of content. We did, हमने इतना सारा शेड्यूल किया था. And we also published it. And 33 Facebook posts and 14 Instagram posts and 4 Instagram stories. Kisi must have also been doing something. यहाँ पे 33 और यहाँ पे 14 दोनों में difference क्यों है. Then we have results 1.6 Facebook page reach, Instagram reach. तो भाई हमारा reach था 143 people and on Facebook it was 1.6k people. सो लेट्स गो टू व्यू ऑल इनसाइट्स. ये हमें थोड़ा ब्रॉडली दिखाता है कि भाई लास्ट वीक आपके एक्टिविटी में ये हुआ. सो नाउ अगेन यहाँ पे लास्ट 28 डेज़ का दिखा रहा है. इफ़ यू नोटिस हेयर, एंड दिस इज़ द एड अकाउंट, यू डोंट नीड टू लुक एट द एड अकाउंट फॉर नाउ. यहाँ पे मैं कर दूँगा दिस ईयर,
we don't have lifetime here, so instead of this हमारे अभी तक 3 मंथ ही हुए, 3 महीने ही हुए, so I can also use last 90 days. So देखते हैं last 90 days में कितना reach हुआ है, क्या क्या काम हुआ है. So Instagram 1000 impressions. So देखते हैं Instagram reach. Now what does it mean? So यहाँ पे जो impressions लिखा है और ये जो reach है, इन दोनों में कोई relation है कि नहीं है. So the number of unique accounts that saw any of your posts or stories at least once. So ये impressions हुए, I believe. Reach is different from, oh I'm so sorry, I should have read more. Reach is different from impressions, which may include multiple views of your post by the same accounts. This metric is estimated, so you cannot find a real answer, of course. So this is different than reach. This is impressions. So कितने accounts को unique number of times आपका account देखा वो reach है. Impressions, so भाई एक बंदे ने कितने बार देखा वो, that's also different. So I'll click on impressions. Maybe it will also show me the value. So the number of times that your adverts were on screen, how it's used. Impressions is a common metric used by online marketing industry. Impressions measure how often your ads were on screen. But हम लोग ads नहीं चला रहे. So I'll have to check this out first. And I'll also put this in my notes to find out whether what this means, या जो यहाँ पे जो impressions लिखा है वो यहाँ के reach है या फिर कुछ और है. Then देखते हैं और क्या देखते हैं. Post frequently and consistently, we have been doing that. Improve engagement for your content. Median post likes and comment shares is 7. Median story. Try reaching more people. So it's showing me different ways to grow. इसको मैं बंद कर देता हूँ help को for now. And you can scroll up and down. You can read video summary, reactions, likes. तो हमारे पेज की ये summary है. इतने followers, 3 followers आए कितने टाइम में in the last 90 days. हमारी कितनी लिंक्स को क्लिक की, तो एक लिंक को क्लिक की, कितने बार हमारे वीडियो शेयर हुए. Everything on Facebook. Now let's go to, where will we go to? We'll go to video performance benchmarking. Nope. So we'll go to, what do we want to know? So we want to know the impressions. So we'll go to audience, current audience, Facebook page followers 3, and Instagram 149. This is the age group 18 to 24. This is also, well, they're all age groups if you think about it, but 18 से 24 में males ज़्यादा देख रहे हैं हमारा content. Then 25 to 34 में भी males ज़्यादा देख रहे हैं हमारा content. I see that, I can see that. कौन से cities से हमारे content को देखा जा रहा है, ये सब लिखा है. Anyway, let's go back. Maybe impressions का clear नहीं है, so we'll have to check what it means. हमारे Facebook के भी impressions डालने पड़ेंगे, so we can check it out for ourselves. But we will get back to this in another section, maybe tonight or maybe tomorrow morning again. And thank you so much for going through this detour. अभी हम वापस freeCodeCamp पे जाएंगे after in the next live video, and I think it's already 2 hours. I see. So I will see you guys after 2 hours. और जब मैं वापस आऊँगा तो हम freeCodeCamp करेंगे. freeCodeCamp के नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे जाएंगे. हमने लास्ट वो पेंटिंग फिनिश की यूजिंग CSS बॉक्स रूल. सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट अदर रूल्स एंड व्हाट अदर थिंग्स वी नीड टू लर्न. एनीवे, सी यू गाइज एंड चाओ. क्या आता है माउस.